guided several dissertations of MTech, MSc, BTech, and postgraduate diploma courses. He always loved to work with PhD scholars, master and graduate students for their research work and motivate them to adopt research-oriented professional career. He received the Pishorth Rama Pishorti Award for contributing state-of-the-art fuzzy-based algorithm for Earth observation data. His current research interests are in the area of soft computing based machine learning for single date and temporal multi-sensor remote sensing data for specific class identification and mapping through in-house development of the SMIC tool. He also works in the area of digital photogrammetry, GPS, and LIDAR. So, welcome you, sir, and good morning on the behalf of Faculty of Engineering and Technology, Tirthankar Mahavir University, Muradabad. I, Dr. Garima Goswami, HOD Electrical Engineering Department, and as a convener of this 12 days DST sponsored FDP, I heartily welcome you, sir. And we are fortunate that we have you and participants. It's a very typical situation when pandemic is going on. We cannot go here and there to interact the persons all around the nation, but it's a great opportunity with us that through this FDP, through this platform, we can interact with the renowned personalities like sir. He's with us from he's from ISRO. He's a renowned personality. It's a great opportunity to all of you to interact with him, to discuss with him. If you have any doubt, any confusion, any query, you can discuss with him. It's a great opportunity, and don't miss it, please. So welcome you, sir. And yeah, participant, there's an announcement also that there is a slight change in the topic of sirs. Like, sir will speak on opportunistic approaches in geospatial technology using deep learning over world's trending business. So this will be the sir's topic. So please, I request all of you, all the participants, to keep your mic off. And if you have any query, you can post it on the chat box. After this session, we will have a quiz session, and the link for the quiz I will post on the chat box only, and you'll have to submit within the day, right? So over to you, sir, please. Thank you, Dr. Garima Goswami, for introducing me and giving the opportunity to deliver today's talk. I'm thankful to Tirthankar Mahavir University for considering me to deliver this talk in faculty development program. I have been associated with the Tirthankar Mahavir University from 2009 onwards, basically guiding students from MCA and then PhD also. And this IARS, if you know, this is an academic and training institute under ISRO located at Dehradun. It is conducting MTech, MSc, PG diploma program in the area of remote sensing and GIS. There are tailor-made programs also as per the requirement. And since you all are from university side, so there is a very specific program IRS conducts that is called NNRMS program, that is for 2 months program as a regular program, but this time also, and last year it went online, but next year, nevertheless, who wants to join, they can attend this 2 months program that is dedicated for all the university faculties with 9 application streams in the area of application of remote sensing and GIS. So that is just short, and thank you for briefing me for the nice words in this early morning. This pandemic is an opportunity, and my title also says the opportunistic things. So we have to see the opportunity, and my lecture, if I start sharing up, so this is the topic. I hope my slides are coming properly. There is no issues. Yes, sir. It's visible completely. So if you see the today's talk, what I've fixed for you all, and that is opportunistic approaches in geospatial technology using deep learning over world's trending business. So here you will see 3-4 things on which I'm going to talk and give you focus. One is opportunity or opportunistic approaches. This is very important word in this life.
and you will see how you choose the life, and that life choice makes your destination. But my application will be in the geospatial technology because I'm working in the area of remote sensing and GIS. So that is the meaning of very single word. We can say geospatial technology. Geo means earth, spatial means coordinates, and using deep learning. So this is the buzzword coming up for the last 5 years, and still it is continuing, like COVID is still continuing. Then world's trending business. This is very important, that we should see always the latest trend, the latest technology. There it is easy to learn very basic things you have to learn, and further you can start contributing in place of taking some old technology which is already saturated and a lot of people have used and developed it. So here if you see the opportunistic approach, that is meaning of basically taking advantage of opportunities as they arise. This is very important. As they arise, anything comes to you is a task. Anything, eating a food or wearing clothes or tackling this COVID situation, it is all task which we have to tackle. It is our choice how we choose. If I think it is a problem, then there is a lot of stress, lot of negative things in my mind and in the body. But if I think that this task is an opportunity to contribute to the society, then we are towards positive side, right? So we can contribute to myself and to the society. So how all this happens, this happens due to choice. So whatever we have or get is an opportunity. Whatever is coming to you is an task. Only thing how you interpret, taking it as a problem or take or considering it as an opportunity. Like if you somebody gives you a shirt, so that is also can be a problem or opportunity. Somebody says, what is this color he has given, he does not have good thing, but another person can say, thankful for considering me and giving me respect. So that gives some opportunity to do something. So this all depend upon choice, and how this choice, if you see the life geometry, this is very, very important. Normally we have studied geometry in the 10th class, where we talks about joining point A and B with a straight line. So there it was taught AB geometry, and with an example of straight line, there was no any choice, we have to choose a straight line. But in the life, the geometry is called life geometry. It follows, it does not follow AB rule, it follows BCD rule. So what is this BCD rule? BCD rule talks about B for birth, D for death, and C for choice. So these are the 2 points what we get even in our life. One is birth, by somebody gives the birth to us, and after death is also fixed. So birth is fixed and death is fixed. We don't have choice to choose to change it. So the things what we receive is basically given by birth, but in between if you see, that is B and D, we get choice. The choice is how to move from birth to death point. So there are 2 points in life which are fixed. So how to move, we can move with a straight line, we can make like a curve. So it is all up to our choice. So when you talk about opportunity, so any task what we get to in our life, we can interpret it as a problem or it is an opportunity. Your head gives you some work, please conduct this new course as a 5 days program. Somebody says, oh, this is a burden to me, every time he goes on giving work to me, not to the other colleagues. So that way we create negative things in our mind and in the body, and we don't grow, we start going bottom downside. But other person says it is a good opportunity, thank you for considering me for conducting 5 days program, and I will do quite differently. So he thinks, and that task is an opportunity. It's very simple, opportunistic approaches. It is not very technical that you have to do MTech or PhD. We Indians, we have very good thing called Adhyatma Gyan. From there, these things comes out, and if we learn and teach ourselves, anything we can solve. So if you talk about world's trending business, uh,
It is basically every alternate 10 years, we can see a lot of buzzwords coming up. So always work with latest buzzwords. So buzzwords you can see, for example, like deep learning in different areas. If you see today in some areas, the deep learning is coming up very nicely. For last 5 years it is there, and it may remain for coming 5 years more. That so these buzzwords has lifespan of around 10 years. Long back, if you think about, in 90s, IBM came. People were doing 6 months program or 3 months program, and then they were going to America to take the task of IBM. So they have taken that learning of IBM as an opportunity, and from they have grown in their professional life. Then you can see a lot of other buzzwords: temporary social media, parental DNA sequencing, additive manufacturing, then Baxter, the blue collar robot. So there are different areas. There are few uh, areas I have listed where in the current scenario these buzzwords are coming up, and the corona has also given one as an opportunity. Somebody thinks about it is a problem, I can't survive, then definitely he will die in the coming days. But the second person, if he follow, he corrects its life daily basis, doing exercise and doing the very right things to keep the mind and body towards positive side, he can really survive and he can give support to others. So that way the opportunity comes, and we have to see work with the buzzwords to catch the or to maintain the pace with the trending business. I hope my slide and voice is coming fine. There is no issue. Yes, sir, absolutely fine. Fine, thank you. So going further, the deep learning, which is a buzzword I told you because that is my domain, because I am working on the image processing specifically for remote sensing images to be processed to extract some information. So that is my area, and from where from last around 14-15 years I'm continuously working on machine learning for remote sensing data processing, and from there further I'm going to learn and try to apply deep learning. And now, after learning, I'm trying to apply some different way. That will be my contribution if I can do that. So application areas, if you see, study machine learning and deep learning algorithms to process remote sensing images, because they have very important information which can be used for social studies and for social development in different areas. Specific crop mapping, that is my very loving areas where I do test these algorithms. And then specific object detection, we will see with my own experience how this has been tried. And then geo coordinates extraction, this is also very important. Can we do automatically the coordinates of different objects through these algorithms? Then within algorithm, can we give support to other algorithm? Number of times when we are processing very high resolution images for detecting buildings, cars, aircrafts, it is very difficult because different objects, aircraft with car give same signature. So car and aircraft becomes car when I try to detect. So what we are trying the object detection approach first to detect and then applying its application in image classification. So everything is possible once our mind is positive, because there is nothing negative. If I remove one line in the positive symbol, so if I take, there are two lines, and if I remove this line, then we have only single line, that is negative. So always use two lines which are perpendicular to each other, so that we are always positive, right? So this positivity also comes when I see this word called impossible, and somebody says it is impossible, but other way it says I am possible. So that way, if this attitude we keep, I am possible, so everything becomes as an opportunity. So further, if you see this deep learning, machine learning, today these are the very big domains has came up, which is considering a lot of things, and this comes under the application of artificial
intelligence. Artificial intelligence use the data from different sensors, different technologies are there, but one of the application which has been generated, that is through machine learning. So machine learning is a very broad uh, area which comes to give us an application in artificial intelligence. And under machine learning, we can see very small domain for very specific applications, the deep learning approach, which has been developed by different researchers. And for last 5 years, we can see this buzzword is there in the market and in the academics. So talking about, now I'm pushing you towards the geospatial domain, the deep learning concept and the opportunity always that I've already defined. Anything you do has an opportunity. If somebody gives you a spoon, that is also an opportunity. Somebody says, what is this? He has given this item. So that is a negative way. But if I think anything comes to me is a prasad, that is a way. In India, when you go to Gurdwara and you are doing langar, you have to ask the chapati while holding your palm upside. So that means you are asking. The more you ask, more you get. And if you consider that langar is a prasad, it is not lunch, it is basically prasad. Prasad means whatever has been given, that should be accepted. So moment we do with this approach, so anything which comes to me becomes as an opportunity, right? So artificial intelligence, if you see, is a very broad term, and under artificial intelligence, the machine learning gives as an application, and it has touched on every possible domain. In different areas, artificial intelligence has been applied, and there one of the application you can see, which is coming on through machine learning under artificial intelligence. So geospatial world is not an exception where AI or machine learning has not been applied. You can see it has been applied for building extractions from the remote sensing images, for airport detections. Then here also small buildings and the water bodies, aircrafts, detections or mapping. This can be mapping or this can be detection. We will see the meaning of mapping and detection of these objects under remote sensing domain. So geospatial data, if we see, and their applications, the AI holds great potential in many geospatial driven applications like agriculture, because I'm continuously working all the algorithm, whatever I developed or I try to modify the algorithm, I test them on the application of agriculture domain. Then insurance, like any car get insurance or aircraft gets insurance. Now there is a modified word called crop insurance. So in the agriculture also, the crop insurance is going on. So farmers can insure their crops, and if some disaster happens, they can claim that crop through crop insurance if they have. Then in transportation, now you can see for navigation or when you are driving, you can very easily see the auto guided map tools on your smartphones, and it really supports you wherever you are going in an unknown place. It can really guide you very nicely. Then urban planning and disaster management. In some areas, I have worked for disaster management also. This can be maybe due to water floods or earthquake or so other areas. So here you can see through CCD cameras, the different cars with the model level has been detected. So these are the applications of deep learning. And here in the agriculture, they can map with the sensors what are the basically vegetable or fruits has been ripened or they have a disease or like that. And if you talk about in geospatial technology, one of the very important information content what we use to extract is through classifying or detecting. So these are the two major approaches or processing approaches in the satellite images. One is classification to prepare very high accuracy thematic map, and second is detecting the objects. And further, we can have supporting approach called segmentation. The segmentation basically helps to improve the accuracy of classification and detection. Segmentation means dividing the complete image into small
segments. So previously people were using the conventional segmentation approaches, but nowadays people have gone using deep learning all methods to go for segmentation of the images. So task that AI can perform with more speed. So advantage if you see for classification, detection or segmentation, when we are using the AI through deep learning, so we can achieve much better speed of processing. Consistency is very, very important. We get very consistent results and perhaps more accurate than human performance. How it is like if we have to count the number of cars present in this area, it can be live video or it can be still photograph. We can just apply the trained deep learning model and immediately it will tell how many cars and of what model. If the deep learning model has been trained to detect the number of cars plus the type of models, within 5 minutes we can get this information. We can see for classification, this is the raw false color composite remote sensing image, and this is the classified image where we can see different classes has been mapped. You can see the natural objects like here the shown elephant, it has been segmented. Segmented means the different similar areas has been divided into small regions. So here this is similar area which has been divided one region. This is one region in the yellow color. This is the third region in the green and so forth. So once we divide the area into small regions, then further this information we can fire in the classifier to minimize the false detection or false classification. Then we can see further image processing. If we talk about, it is called in computer science domain as computer vision. Basically visualizing the image with the eyes or through computer. In particular, a subtype of machine learning is called deep learning. So in image processing, the very common thing or is basically classification or detection, and in computer science we call it as a computer vision. But the for very important classification and detection, we have to go for machine learning algorithms, and in that the subtype we can get the deep learning. And deep learning is basically an algorithm inspired by the human brain using neural network. Last 30-40 years, the neural network has lead in the machine learning domain, or with respect to other algorithm, the neural network has taken lead. But last 5 years, neural network has become a basic algorithm, and further the deep learning algorithms has came. The like very simple deep learning algorithm is CNN, convolutional neural network. So here you can see this is the input image. It can be for this can be as a training data. We can have the convolution layer. So these are convolution filters, and applying these filters we can have multiple convolution layers, or where we basically extracted the features. We can have max pooling so that the data is reduced, and then we can have fully connected layer. This is a fully connected layer. It is like similar, just like a neural network, but before that there is a lot of pre-processing going on, so that some of the hidden information which we can't extract through normal machine learning algorithms or through artificial neural network, but after doing pre-processing through convolution layers, we can detect that hidden information present in the image with very high accuracy, with very high homogeneity in the output and so forth. So here you can see, I've already explained you artificial intelligence. Basically it is a program that can sense, reason, act and adapt. Basically reasoning is very, very important if some model can do that. So how to do that? One of the component is achieved in artificial intelligence through machine learning. Basically machine learning is algorithms whose performance improve as they exposed to more data over time. So in machine learning, machine and then learning. So there is a very common term has came in place of having different subtitles of classification or regression algorithms. Nowadays a broad terminology has been given called machine learning. Advantage of machine learning is it is not to calculate always 1 and 2 into 3 is equal to 6. It will also decide if the number is something else, what the output is coming up. So that reasoning concept
should be developed from the data driven. So it is not algorithm driven previously. Previously, all the algorithms were working through algorithm driven output, but nowadays they have been modified to work through data driven. So as the data is changing, algorithms should adapt that change and behave or give the output accordingly. And further subdomain in the machine learning is deep learning, basically subset of machine learning in which multi-layered neural networks learn from vast amount of data. It is just like human beings. As I goes on studying same mathematics subject from class 1 to class 10th, so every year that new thing is taught to me and I am learning on that mathematics topic. And after some time, I can develop my own reasoning to understand and to conclude myself on mathematics. So there is no need to support, the teachers will support me. I can conclude by myself. So that is reasoning is developed. Same way, these algorithms are made or to be implemented such a way that as the new data is coming up, they should train by themselves. So that is the beauty of these machine learning or deep learning algorithms. They learn by themselves. So that has to be that way. They have, these algorithms should be implemented. So they are data driven algorithms. If you see the base of deep learning, the neural networks require a large number of parameters and fine tuning to perform well. So here, if you see, neural network is the base algorithm on which, on the top of these neural networks, the deep learning algorithms have been developed for classification, for object detection, for image transformation. Transformation means there is some rose image, you want to convert that into car image. So that transformation you can do through deep learning much nicely and with much better accuracy. So here, number of times it has been talked about availability of GPUs should be there because their hardware computation is very high for deep learning, and it uses basically transfer function or transfer learning to apply deep learning without any worry. But here I would like to mention my own experience. All deep learning algorithms does not require GPUs. It all depends how complicated model we have designed or we have adopted. According to the model complexity, according to the dimensionality of the data, we may think about to use GPU. Number of times it is not always there. With the nowadays with the normal 16 GB RAM laptop or PC, we can work with deep learning algorithms. So world trending business, the word which is there in my basically topic. Today, if you see the trend for the data, the huge data and automation. So one is data is huge. The problem is we have to solve some problem for this, that is through automation. So can we do some automation? Can we process this huge data? Yes, the deep learning algorithms, machine learning algorithms are coming up. We can modify if we have some good capability on that or good understanding on them, and we can do some automation. So there, to process huge data and do some automation, these two things gives opportunity. So opportunities approach what was there in my title. So if we can process this huge data, data can be anything. In my domain, I talk about remote sensing data from optical, microwave, thermal. In your domain can be text data or voice data or video data. And can you do some automation? Can you do some automation on that? So these are the thoughts which gives the opportunity, and that is basically world's trending business. So here you can see opportunistic approaches. What I'm talking about is basically deep learning. Can we do something? I'm working. I love to do that. So the moment I say I love to do that, that is my passion, and I maintain that passion. That momentum has to be there. Then my area of working is geospatial technology, world trending business. Yes, I goes on trying to think some contribution, some solution, and try to follow the trends which is coming up from the world. So we learn from the world, so that way we can follow the trending business. Opportunities, if you are positive always, then this is always opportunity to me or to you all. And then we can find out our working area, in which area we want to work.
So here I'm going to share my own experiences from this slide onwards. So learning means, like machine learning, deep learning, learning means acquisition of knowledge or skills through study, experience, or being taught. So there are two words I've talked about, machine learning and deep learning, but we do forget very important thing which is required is human learning. So this is very, very important, on which we have to work. The other two learnings will come automatically. Machine learning, if you try to understand again a little bit more, application of, basically this is an application of artificial intelligence that provides systems ability to automatically learn and improves from experience. This is very, very important. As the new data is coming up, it should learn from that without being explicitly programmed. Now, this machine learning can be supervised learning. Same thing, you can see the similarity in the human beings. We go through supervised learning while attending classes, first class, second class, third class, BSc, BTech. So there is a teacher. So it is supervised class. So through same way here, there is some training data, so through which the algorithm learns. Number of times in the class, there is no teacher, so it is unsupervised class. Same way here, when there is no training data to the algorithm, then the algorithm works as unsupervised learning. Semi-supervised means in the class, the teacher comes, gives some question and goes off. Same way here, if we have little bit training data and very large untrained data, then if we try to train the machine learning algorithm or deep learning algorithm, then we can say it is semi-supervised approach learning going on. And fourth one is through reinforced learning. Reinforced learning means if we are giving some reward for any output, if I'm giving reward to the machine learning algorithm, then it is called reinforced training. And according to the reward, the algorithm corrects himself. So that way, the four type of learning can be done. And you can see same thing happening in the human beings or any creature. The bird teaches their kids how to fly, how to eat, right? So same way for any creature, if they have to do some activity, the first thing is they have to learn how to do. So learning is very, very important. And in the lifespan of human beings, from birth to death, learning never stops. So please always do learning to do something new. Machine learning, if you see their applications, mainly for very good informations we can extract through classification and for prediction. Classification means trying to group the similar pixels if we are processing an image. So here you can see similar pixels of water, settlement, and unclassified pixels. Or we can use it for prediction of rains. Like tomorrow, nowadays there are portals, just type in Google and check in Moradabad tomorrow rain will occur or not. So system will tell you the chances of rain will occur or not. So you can predict through regression. So that is one application in through regression. We can do predictions also. It can be rain, it can be any other thing. We can predict after 5 years or after two months or after second or after 1 week the COVID will vanish or not. So that type of prediction we can do, but it requires the concerned data. Data is very, very important. Without that, we cannot do that. Further, if you see some changes in the machine learning, specifically the management people, they consider support vector machine, random forest, decision tree as the dedicated machine learning algorithm, because they have learned and they have included only these algorithms. But actually, if you see any classification algorithm or detection algorithm can be kept under machine learning algorithms. It can be C-mean algorithm, maximum likelihood classifier, linear mixture model, support vector machine, random forest, decision tree, fuzzy classifiers, ANN, and so forth. Any classifier or any detection algorithm can be kept under machine learning algorithm. There are a lot of issues while processing the images, specifically the remote sensing images. One is mixed pixel. In a pixel, two or more than two classes are present. So how to handle them? In the images, we may have the noisy pixels, unwanted pixels. So how to handle these noisy pixels which are unwanted coming through sensors or from the ground? Isolated pixels, like there can be 1 or 2 pixels of water which is surrounded by forest. But when I'm mapping or extracting information at 1:20,000 scale,
that pixel does not have any meaning. So how to remove these isolated pixels? This is also very, very important. Spectral overlap. Two or more than two classes can give same spectral signature. So how to handle these pixels? So that is also very important. Then non-linearity. If you see, because when we go for classification or object detection, we have to see that the two classes are linearly separable, then only any classifier can separate them. So here you can see this case, there is a linear separation between two classes. But here, if you see, there is a circle between two classes, there is a non-linear separation. So how to handle this non-linear decision boundary? Then heterogeneity within class. Within class, you can see a lot of heterogeneity, lot of variation. So how to handle that? Here you can see some are white patches, some are light blue, light cyan, and here also some dark red and little light red. It is a one class of forest. This is a barren land. So how to hello? Yeah, I'm busy. You can call me after 12 o'clock. So how to handle this heterogeneity? This is also very important. So if you see in machine learning, the mixed pixels we can handle through fuzzy set theory. Noisy pixels we can handle through contextual approach. Isolated pixels again we can handle through contextual approach. So here you can see one of the example of contextual applying through Markov random field. So here one issue is there is a water body in this image, and this is a road here. So along the road there are tall trees and they are giving shadow. So when we classify the water body, the shadow also comes along with water body. So in a normal classifier through fuzzy approach, you can see along the road there is a white line coming up. So how this is shadow, this is due to shadow. How to handle this? This is very important. So when we have applied fuzzy algorithm with contextual information, we can see all these shadow portions has been removed. So here through contextual we have gone for two approaches. One is smoothing approach. Second is discontinuity adaptive period or DA model. So here we can see DA model preserves the boundary and small details are preserved. Here you can see these water bodies are coming as it is. Here they are lost. Their smoothing has been done, so they have been lost. So this can give you much better results. Then effect of noise, again we have taken through local information method. Here this is the original image. This is 1% intentional noise has been added, and this is 5% intentional noise has been added. So when we are applying the local information method, here we can see 1% noise has been handled very nicely, and here up to 5% noise has been handled very nicely. So if there are some noise through local convolution method, we can remove this noise while doing classification of the images. So then next is non-linearity. How to handle? We can use kernels in the machine learning algorithm. We can introduce kernels. If it is not present, we can introduce. That gives innovation. I told you how to contribute, how to do something different. If we can think about how we can add something else in the existing algorithm, so that way we can give some research or some contribution from our side. So in the normal machine learning algorithm, what we have done, we have added the kernel approach if it is not present to handle the non-linearity between classes. Then spectral overlap between two classes we can handle through temporal data. If I'm using 2 date or more than 2 date data, we can handle the spectral overlap between classes. So here you can see very important thing about importance of time, and you can see here I've given the different words or synonym to the time, like time, samay, kal, moment, period. This is very important in remote sensing domain, and we can use it through temporal resolution, through temporal images, and this can help me to map a specific crop, to map diseased crop, to map some crop which has been damaged due to natural calamity, so that crop insurance company can identify which are the fields which has been affected and they can give the insurance. Then so here you will see few outputs where we have applied temporal data for mapping a specific crop. So here, just a minute. Hello. Arjun, kab tak aa rahe hain?
So here, what we have tried to map the transplanted paddy fields in Rador district, and we have taken 4 date image. What the problem is, if I take single date image, the existing lakes, canal, river, and the paddy fields where the paddy has been transplanted, they are water flooded. So on the image, the paddy fields initially and all the water bodies gives same signature. So how to separate the paddy fields with the existing water body in the area? We have to use temporal data. So in temporal data, in the time domain, if you see, the water bodies are always filled with water, but paddy fields initially dry, and then the paddy, that means water has been applied, and they are filled around half feet or 1 feet water. So here we have taken 2 date previous date of transplantation, 19th June, 29th June, and the transplantation has been done on 8th July, and one image of further transplantation, that is of 13th of July. So and here we have taken multi-bi sensor, or here this is sentinel data, this is your Landsat data, and this is your microwave data, SAR, synthetic aperture radar data. So we are integrating also the data from different sensors. Here, when I talk about this slide, I always give example that it is not always the girl and boy marry off from same caste. Nowadays, we have seen the girl can be from Tamil Nadu and boy can be from Punjab, and they marry and they live successfully. Same way here, we are taking the data from different sensors. This is optical data at 10 meter. This is optical data at 30 meter. And this is synthetic aperture radar microwave data, again at 10 meter. So if I don't have 4 images from same sensor, then I have to use the images from other sensor. If I cannot go to marry in my same caste, then I have to search in other caste. Very simple solution. Same way here. But still here, we have seen this canal is giving same signature like transplanted paddy field, because this was a dry initially, after it was wet due to rains, and then there is a grass in the canal. It was giving same signature like paddy fields in the time domain. So what we have done, we have added one more image of 6th March. So 6th March, the paddy fields were having a rabi crop, that was mainly the wheat. And after that, after adding this 5th image, we can easily see this canal has been removed. So this, the importance of time, temporal information is very, very important. This is the model information. You can see we have applied for CNN model for extracting these paddy fields. 128 layers in the first convolution layer, then 64, and then max pooling and dropouts and so forth. And you can see here epoch and the accuracy, epoch and the loss of the function. And we have experimented to add RNN. RNN has one of the version called LSTM, long short term memory. So we have added 1 or 2 layers of LSTM in CNN to make it as a hybrid or integrated model. And here you can see CNN convolution layer, and then you can see here LSTM layer. So this, from here also we have got the output, but output was not so much better. So we have to see why it is. But still we got some output, and this gives a hint that we can take hybrid model also. And these are the few conclusions from here, that if I'm taking 20 samples, 20 pixels, 30 pixels, 40 and 50, we found 50 pixels has given maximum accuracy in CNN as well as in RNN model. In both the cases, 50 samples were more than enough. Even though we know deep learning algorithms require large training data, but not always. So that myth or that statement, don't take 100%. I will give one more line, is maybe funny. In the class, teacher teaches, and that is 100% correct. But that is not 100%. Whatever teacher is teaching, it is correct, but that is not 100%. Please believe that, because beyond whatever teacher has taught, beyond that also, there is something unknown thing we have to explore and we have to learn. Same thing in a book. Whatever written in the book is not 100%. Whatever written is fine, it is correctly written, but it is not 100%. We learn from the book and we have to go ahead to search something new. So again, that's a belief that whatever teacher teaches is not final, and whatever written in the book is not final if you want to explore and extract something new in this world.
Then here you can see we have tried to map sunflower crop in Kurukshetra region near Shabad area. The sunflower crop is sown by February, March, and it is harvesting by May and June. So we have taken the date from March to April, and here we can see very easily the three stages: early sown of the sunflower crop, middle sown, and the late sown. We can extract these informations, and we can further conclude social aspects of the farmers doing agriculture of sunflower in this region. Why? Then importance of temporal data, as I mentioned you, we have experimented in the built-up area also. Generally, people extract the build-up change, but here we have extracted the building footprints. Can we map the building, new buildings came up in the coming 6 years? So answer was yes. So we have taken two date image, one of October 2013 from Landsat 30-meter image, second October 2019 Central 2 image of Dehradun, and we have applied fuzzy based MPCM machine learning algorithm to extract the building footprints. So this is the image. This is our training data, training site we have taken, and these are the test sites in within the same image of Dehradun. Since we know each and every pocket of Dehradun, so it was easy to do the ground truth. We don't require much ground truth. We are aware. And in the last year pandemic time, we have done this exercise with 1 month case study, and this has been published. Please remember, this was just a 1 month case study, and we have published this work. There was 6 or 5 reviews. We have tried, we have made the corrections, and finally in SN Applied Science Journal, this work has been published. So here you can see for the testing sites of Kalidas road of our campus, we were able to map the different buildings. This is our new Vikram Sarabhai hostel, the dining hall, Golden Jubilee building. This is the new building just outside our campus. This is Meridian Height apartments, and this is Shivalik apartment. So these are the new buildings came up in the last 6 years, and we can map. It is not just change detection within urban. Within that change detection, can we map up to building level? That is the very beauty of this technique what we have developed. In normal NDVI, we can see only it is telling how much vegetation has been reduced or increased, and through post classification it can tell how much settlements has changed. It cannot tell how many new buildings has came. This is the approach. Then we have tested for Baruwala, our training site. We can easily see the building footprints. You can see the large building were easily mapped through this approach. In Doon University, last 6 years, we have seen 2 new buildings has came up, which was easily mapped. Around Sabji Mandi or main Sabji Mandi of Dehradun, there are a lot of apartments has came up, and we can see these apartment buildings, which has been popped up last 6 years. Then around ISBT is an old one which has not been mapped, but surrounding to ISBT, new malls and the new offices has came up, and we can easily see which has been mapped in the last 6 years through this technique. Then heterogeneity is very, very important. Within class, there is a heterogeneity, how to handle that. The current machine learning algorithm does not have so much capability to handle these heterogeneity. So we have experimented while using each sample as mean. I can give you a very layman example. In a class, there are students scoring 60% to 90% marks. We say average of the class is 70%, but by the average, you does not get any idea of the performance of each student. Average is a statistical parameter to satisfy that my class is scored 70%, but that does not represent each and every student performance. So here also, the machine learning algorithms, maximum algorithms use the mean parameter from the training sample, and once we use mean parameter, that does not represent the each sample effect on the algorithm. So what we have tried, we have made each sample to work as a mean. So moment we have done that, here for Banasthali region in Jaipur, once we have applied each sample as a mean, we can see the heterogeneity has been handled. This class is quite homogeneously has been mapped. But here when we are using mean, you can see here there is heterogeneity within class. This for mustard crop, and this is the Banasthali campus. You can see this is the runway of the Banasthali campus.
since my daughter is studying there, my heading in my title, opportunistic approach, right? So since I visited my daughter frequently, so I was having one day free. I just walked in the winter time outside the Banasali campus, and it was fully flooded with wheat and mustard. Mustard was flowering with the yellow color. It was looking so beautiful. And since I am working on agriculture, I found this is an opportunity to map these algorithms, these crops. So I have taken the sample. Nowadays through GPS, it is there in my mobile phone. Every smartphone has a GPS. So I have taken an app. Through that, I have collected the coordinates of these crop, that is grass, wheat and mustard. Once I have the training samples from that ground, I came back. One student wants to work, so I have given the project. One ex-employee of Titankar Mahabir University, Mr. Mrgang Singhal, is working with me. I'm co-guide. Now he's in MIT. He has taken this task, and his work is under publication to see the effect of each sample on the classifier. So opportunity comes. We have to see each and everything which is around us is an opportunity. So when you chant in the morning in front of God for doing puja, that time chant, जो भी है मेरे पास, whatever is there surrounding me, सब कुछ as is an opportunity to me. It is a मौका है मेरे लिए to contribute. So that way you can really see a growth in your life. So that way we have explored, and we have experimented now with the crop, with the grass also. You can see there's a cricket field in the Banasali campus, but you can see a lot of other fields which has not been mapped here. This has been mapped here while using the each sample as a mean. I can give you one more example. If in a company there are 10 people, one boss and 9 employees, so employees task is to do jobs, and boss job is to get the contract. So there is only one boss, so he can think only limited way he can think. But if all work like boss, all think like boss, and all work like as an employee, so thinking becomes 10 times. So it is just again opportunity that each can work as a boss. It is possible. Everything is possible in this world. We have to say there is nothing negativity in this world. The moment we use only one danda, it becomes negative sign. When you use two danda, which is perpendicular to each other, it becomes positive. So remain positive. So this is the way we have got nicely all grass fields, and same for the wheat fields also. Then machine learning to deep learning. I've talked about a lot about machine learning. Let me just give you a few outputs on the deep learning also. So deep learning, if you see, it's a modified version of artificial intelligence. Last 40 years, the lead algorithm was artificial neural network, but today artificial neural network has become as a base algorithm in deep learning domain. And why deep? Because in the deep learning, we can do some lot of pre-processing to take the data to higher dimensionality. That means extract so many features. That means that the dimensionality of the data is increased, so that we can see some hidden information present in the images. That is a way it is called deep. So deep learning generates large number of features to take the data to higher dimensionality while incorporating non-linearity in the data. And it is not just adding number of layers. In ANN, if you add large number of layers, it does not mean you will get the deep learning effect. Yes. So here, Sir, sorry to interrupt you. Yeah. Actually, we have skipped the 10 minutes break that was mentioned in the schedule, and that was for quiz. So you can sum up your session until 11:10 or 11:15. Yeah, madam, I will sum up. No And problem. after we will post the quiz. Sure. By 11:30, I will finish also. Thank you, sir. Yeah. So, and here we have seen, because in the deep learning, each sample are used as an input for training. It can handle the heterogeneity. We don't have to apply the mean or individual sample as a mean concept, but in machine learning we have to apply. But in deep learning, it can handle the heterogeneity. That is also the beauty of deep learning concept. So here, this can be used for classification, for detection, or image transformation.
The very basic algorithms are CNN, RNN, and their hybrid versions for classification. I've already talked in the previous slides about their applications. Here you can see output of remote sensing as a classification through FCM, through PCM, through ANN, the base classifier of deep learning algorithm, through CNN, and through MPCM. Here we can see the heterogeneity here has been handled without doing anything. That is the beauty of CNN algorithm. Here we have applied GAN. That is again deep learning concept for optical temporal data, using optical temporal data to remove the cloud. So here this is the one image of previous date, suppose 27th of October, and 30th October has a cloud. So we have taken this image as a true image and we have created this as a false image, and this has been corrected through GAN, and you can see the output coming here, which is cloud free. So this image has become useful in the temporal domain with this image. So this is the example of deep learning in image transformation. So these are the models for GAN we have used. There is a generator and there is a discriminator which checks the false image is correct or not. If it is not, it will regenerate. It will ask to regenerate the image. So these are the models for unit for pix to pix GAN. And this is the model for discriminator. And you can see the deep learning, this has very good example for detection. And there are so many algorithms. It can be CNN, fast RCN, faster RCN, mask RCN, fused fully CNN, XGBoost, SSD, that's called single shot detector, YOLO, you only look once, and so forth. So these are the algorithms which has been developed for detection purpose. So here you can see we have input remote sensing image. There's a buildings we want to map. But if I apply normal machine learning algorithm, these boats, water body, or roads will come as a building because they may give same type of reflectance. So here first we have used detecting these buildings through deep learning concept like SSD or YOLO. And then we have applied MPCM. So once these buildings has been isolated through a small box, so outside object will not conflict because they have been masked through these boxes. So these buildings has been isolated. So within that box, the MPCM, normal machine learning algorithm, has been applied to classify these buildings. So the other roads or ships will not give overlap with these buildings. Brick links, how to identify, because the brick links works for 2 months for preparing the bricks and they contribute a lot of pollution in the environment. So how to license or how to map these brick links, which are unauthorized activity happening specifically in India. So we can apply this deep learning concept like SSD or YOLO to detect these brick links, how many brick links are there, and we can count through dots. We can geographically see these points, and we can get the coordinates of the brick links through these algorithms, and then we can relocate where these brick links are present on the ground. Yeah, so this is my last slide, and since I have vast experience, I continue thinking to have one publication. We got this last year publication through COVID time on fuzzy machine learning algorithms for remote sensing image classification. It is available under CRC Press, Taylor and Francis, different online portals. We can see this book as a digital copy or hard copy, hardbound. Thank you all for giving me opportunity and listening my experiences. And now it is your time to ask your questions, queries. I will try my best to give the answers. Thank you, sir. Thank you so much. There is one query in the chat box from Shiva Teja. What is LSTM layer? He is going to ask. Long short-term memory. This actually, if you talk about the basic algorithms of deep learning, the first one, as I mentioned, is basically CNN, convolutional neural network. The second basic model is basically RNN. So RNN has few different versions. RNN. So RNN, one of the version is called LSTM, long short-term memory. So what it does, whatever output comes after first iteration, that output is again taken as an input.
So that is the way the long short-term memory works. LSTM. So it takes the output as an input. Every iteration, whatever output is coming, that goes out as an output, but that output also goes as an input in the model. So that way this LSTM layer works. This is one of the form of RNN, recurrent neural network. Thank you, sir. The next, again, Shiva Teja wants to ask, can you please tell about chlorophyll index? Yeah, this just I would like to add before that second question. The LSTM has been applied more in the text processing, but we have experimented to use in the remote sensing classification. Second was chlorophyll index. Basically, there are band ratioing concept. Band ratioing means dividing the two bands of same image so that we can enhance a particular class. That is called index generation or indices generation or simply band ratioing. So we take just two bands and we divide the pixel by pixel, the corresponding pixels of that image, and we get the output. So chlorophyll index means the indices which can basically enhance the chlorophyll content of the vegetation, because these indices were developed initially for vegetation, like NDVI. NDVI, if you take, there is a red and NIR band of the remote sensing image, they enhances the vegetation. Nowadays, people have developed water indices. They can enhance the water bodies. They can enhance the soil and so forth. And here we have used in the temporal data because we have 6 data image. So one side we have date, and second axis we have spectral bands of the image. But the classifier takes only one dimension. One side we have time, second side we have a bands, but the classifier takes only one dimension. So we have applied here indices to reduce the spectral dimension of the image. Since we were working for forest and for vegetation or for agriculture, so we have taken the chlorophyll index like NDVI, and there are so many other indices. Plenty of indices we can see in the literature, or you can search in the net also. So they enhance that class. Thank you, sir. Sir, can you please suggest us some fields or some areas where we can go for the entrepreneurship using this deep learning and machine learning ideas? Our students, can they start, can they go for the startup or entrepreneurship field? Can they initiate some business like using this technology? Yeah, first word, if you see opportunistic approaches. Exactly. Yeah. Opportunity. I told you, somebody gives you a spoon, he will say what you have gifted. That is the one statement one person can say. Second will say, thank you, sir, I can do something from this spoon also. So we have to remain always positive. Yes, you can do startup with this geospatial, in the geospatial technology domain. You can do startup. You can set up because if you see the example of Google, how it has developed, just having two old PCs from a university, they have taken. They were the PhD scholars. They have dropped the PhD after 2 years, and they found, let them go in the business, and they have hired a garage on the rented basis. They have kept the PC. They have developed that PC as a server, and they started the very basic portal, and they've given the term later Google. Google. Previously, the portal which was their search engine, they were working on the search engine. So you have to see on which area you are working. Either you can learn the existing algorithms and you can start your own startup or being an entrepreneur, or you can have some new algorithms and try to contribute. Like in geospatial technology, you can work for agriculture. There are a lot of agriculture department. There are a lot of urban department. There are a lot forest department. They require some help because they are not so much technically expert. But if you can help them, that is called handsome. Handsome means, can you give a hand to somebody? So that way, can you give the support to these departments? You will write continuously that yes, I can support. Take a small project. Initially, don't take very big cost for the project. You can do that project free of cost. So that helps to develop the confidence by the companies, because they are the god to you. Then you can develop. So startup you can develop. Yes, no, nobody stops. The first thing I told you, opportunity. Anything, if you want to start, you can do that. You should have a zeal, have a proper planning, and think at what time you have to click. Yes, it is possible.
because impossible means somebody says it is impossible. For me, it is I am possible. So everything is possible in this world. करना शुरू करिए. Have a good planning. Planning is very important. Start करने से पहले planning. और there is one saying, don't try to grow mustard on the palm. Meaning, ऐसा चीज मत करिए जो आप नहीं कर सकते. तो अपना कैपेबिलिटी को चेक करिए. What you want to do? Can you work nicely in a service? आप जॉब में सक्सेसफुल हैं या अपना कंपनी खोलने. कंपनी मीन्स वर्किंग 24 hours. डूइंग जॉब मीन्स डूइंग 8 hours, वर्किंग 8 hours. प्लीज रिमेंबर, कंपनी खोलने के बाद वो फेल भी हो सकता है, फेलियर चांसेस ज्यादा हैं. तो यू हैव टू वर्क 24 hours once you start a startup. It is possible. Thank you, sir. Thank you so much. I'm highly thankful to you, sir, for sparing your time and informative lecture to us. And one more question is there. What is the cost function? Is CNN algorithm used in real life application? Just theoretical analysis algorithm? Cost function basically, like you have here, loss function, cost function, they are basically inbuilt models are present. Basically, they estimate your resources and so forth. Because I have not focused much on the cost function, but I focus on the loss function and the accuracy function, how it is perform, how the model is performing, and why it is so. So that way you can see further how this cost function works basically for different parameters. Basically, that can give you the idea of how much resources are required to process. Just like in deep learning, very simple. If you talk to anybody, any expert that you are working on deep learning, they will say, do you have GPU? That means they says that always when we have to use deep learning algorithms, we should have GPU machines. It is not always true. The very simple models you can run on a normal laptop or PC, which is having around 16 GB RAM. Nowadays, by default, you have 16 GB RAM with good processor. That is more than sufficient. That is working. Its performance is more or less like GPU. So you can take very simple models, if not required to be very complicated models are required. If your work is solved by a simple deep learning model, you can do that. We have done ourselves taken 1D CNN models to map these crops, what I've shown you. So that way, one side I'm learning. I'm also new from deep learning for the last 3 years, but I've continuously worked. I learned, developed my own experience, learned from other people works, and got further experience. So I've just chosen 1D. I have not taken the ready-made models. I've taken a 1D CNN model that was sufficient for my problem to be solved. So don't take by default the complicated problems, the complicated models, and try to see which model can solve for you. So cost function, basically, if you see, it is basically complete your costing of your hardware and the resources which is used in the model. So that gives you the estimation of your complete performance. Okay, thank you, sir. I'm sure Dr. Anurag Singh and Dr. Nirbhay Chaube, you got your answer. And if you still have any query and you want to discuss, you can turn on your camera and your mic and you discuss with sir. It's okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you so much, sir. Welcome. Thank you, sir. So now I request Dr. Pankaj Kumar Goswami, the co-convener of this FDP, and he is also the IIRS coordinator from Tirthankar Mahavir University itself. So it's a great time to meet you, sir. We people are also engaging our students with IIRS with so many courses, online courses they are right now doing in all. So, EduSet programs. Yeah, I request Dr. Pankaj Goswami, please, over to you. Before that, I like to add one more thing. By first week of July, there is a 5 days machine learning program on EduSet. I think it will be flashing on that. The registration will be open in the coming days. Yes, sir. Thank you. So thank you very much, Dr. Goswami, just giving me this opportunity to share my of thanks here. So first of all, I'm thankful to the PhD. Basically, those are just providing such kind of effective facilities for the academic and academic skills, like this kind of opportunity. We have a chance, galaxy of knowledge, the galaxy of this academia to really come up
and show experiences and make the peoples understood that how they can create the things within their students, because we have a large strength of the student nationwide. And if suppose a 10% of this would be turned up into the exactly the kind of a motive and thinking of the Ministry of HRD have, and basically innovation cells have, basically different government organization and the institutions, and as well as the other people those are working in the direction of the entrepreneurship, if there would be a possibility, then definitely as a scene after decades will be changed completely. So I'm extremely thankful for the DST peoples. Those are just supporting us. I'm thankful for our management, Tirthankar Mahavir University management. Those are always supporting, encouraging us, and always just giving an opportunity to find out, to seek out the possibility. On the behalf of that, we can do something for the student as well as for the faculty members. I'm highly thankful to the administration of the Tirthankar Mahavir University, Honorable Vice Chancellor, basically Professor Raghuveer Singh ji, who always just give an opportunity. He always encourages us and says us that find out and go look at here about and what you can do for the student to develop them actually holistically. This is very important. Now we are thankful for the director of FOECS, Professor Rakesh Kumar Dwivedi sir. Basically, because of his kind support, we could be able to reach to this destination, and we could be able to connect all the renowned speakers with us. So he has always just given us a full hand support, open heart support, that you just come with the things and I'm here to just support you in everything. So thank you very much, sir. Now it is time to say thanks to Dr. Anil Kumar. Basically, sir, this is your day and you just made us for us. Really so great. And we are highly fortunate to just get you here on this platform and really learned a lot of things related with the machine learning. You really turned up the peoples to understand that this machine learning can make you a successful entrepreneur too. It means you are learning, you are doing. Because if we see here during the pandemic, we have seen a lot of examples. The boards are working. So the boards are working in the restaurants, the boards are working in the areas where the pharmaceutical companies are there. They are understanding, they are basically training themselves and just giving them that kind of an output. So a simple kind of a thing with the help of this machine learning, with the help of this artificial intelligence, will be definitely great boost to the society, and as well as the entrepreneurship, the startup is concerned. So this is one of the finest area if we talk about the individual. Sir, really, we are highly admired, we are highly inspired from your vision and from your knowledge. We are extremely thankful for you just giving us that opportunity, and we are fortunate to listen you here. Thank you very much, sir. And I hope so. This is basically on the behalf of all the participants I'm speaking up here, because the query they were asking, definitely they were just getting a very deep sense of your knowledge. We are extremely thankful to you. I'm thankful to Dr. Garma Goswami also. She's the convener and she's just taking all kind of efforts and just taking every time the 24 hours she's just doing in this and collecting the peoples, contacting them and finding such kind of opportunities for us so that we can learn up. Thank you very much, Dr. Goswami. I'm thankful for the co-convener, thankful for all the team, those are associated with this FDP organization. I'm thankful for each and every person directly or indirectly associated with this FDP. I'm thankful for the e-media peoples, those are working hard for the pre-publicity, and as well as this session is live also. So this session is live on YouTube as well as the session is live on the Facebook. So those because we are working on the online system, and it might be possible because of some internet glitch and something is there. If they missed something up, so now there is a good chance they can just have this. This is online. This is available on the YouTube itself. They can go for. So with these words, I'm extremely thankful each and everyone. I'm thankful for the participant, for the patient hearing, and just incorporating the real sense of this entrepreneurship FDP. Once again, thank you, Anil sir. Thank you very much to connect. As Dr. Goswami said, I am basically working here as a IIRS coordinator of the Tirthankar Mahavir University. I'm trying to really boost up the student to just grab these courses and try to get, and the students are doing well. So hope so, sir. In the near future, I shall be contacting you to get the more information, more benefit from the IIRS itself. Sir. Thank you all. Please take care and remain safe. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everyone. There is an announcement for the participants. There is a quiz link I have posted in the chat box. You just fill it and submit it within the day, right? And now we will have a break. We will meet again at 12 o'clock with the next session. Thank you so much to all the participants. Thank you so much, Anil sir. Thank you for joining us. Thank you. All of you, please stay safe, stay healthy.
So, welcome back, all the participants. Very good afternoon. I heartily welcome to our today's speaker, Mr. Dilip Kumar Tiwari. He is a real entrepreneur with us. And I have some announcement to the participants, as I have already mentioned it in our participants group, that there is some change in the schedule. Like earlier, we were having virtual tour on 1st of May, right? Now, the half of the virtual tour you will have in tomorrow's first and second session, and the half of the virtual tour we will have in today's third and fourth session. And today's session of Dr. S.K. Ghosh has been shifted to tomorrow's second session on the same time, right? So there is a slight change. So today we will have a virtual tour by Mr. Dilip Kumar Tiwari, a real entrepreneur. And tomorrow on the first and second half, he will continue with his lecture with this virtual tour. So I have a brief description about the Mr. Dilip Kumar Tiwari. He is right now associated with the company that is Edits Word. He is a consultant advisor in Edits Word. Mr. Dilip Tiwari has done his BTech from Rajasthan Technical University in Electronics and Communication Engineering and MTech from JNU in Embedded System. And he is having experience in manufacturing and he is Am I audible to all of you? Kindly. Yes, ma'am. Now you are audible. Okay, thank you, sir. Thank you, Dilip, sir. I welcome you in this 12 days FDP's 5th day program. And I'm thankful to you that you have preponed for our request. You have preponed your schedule, half day for today and half day for tomorrow. It's really great from our side. And sir, can you tell me at what? Sorry for the internet mesh over here. So have you listened all the citation which I have told, which I have read out? Or it was network problem? No, there is a little bit network issue, but before that, we can hear that you are prepone or postpone something. I can't hear him. Hello. Yeah, ma'am, your voice is audible. Okay, sir. Thank you. Thank you. Dilip, sir, can you check whether your screen is shareable or not? Not, ma'am. It's not shareable. So please make me co-host so I can share. Yeah, now I can share. No problem. Okay. Thank you. Thank you, sir. Welcome you, sir. Welcome once again. Over to you, please. Yeah, thank you, ma'am. So I think my screen is visible to everyone. Yeah. I can see at my end, my screen is very visible. Sir, your camera is off. Yeah, now it's on. So today I'm going to talk about virtual tour of industry. We will talk about what is the industrial Internet of Things. So I'm going to also cover about Industry 4.0 and Industrial Revolution. There is a lots of faculty from the different background. So I'm trying to cover the very basic things. So how the industries work, okay, and how we can opt the different technology. And I'm going to also tell you about which one is the better and how we can choose. So my today agenda is how to choose the industrial platform
from the market leading company. Like according to industrial requirement, there is a lots of market company like IBM, Infosys, as well as Microsoft, Google. So we have to choose very carefully which IoT platform we have to choose for the industrial requirement. Then we will understand about the industry 4.0 or industry Internet of Things. Then I'm also going to cover about, with the help of video, how we can minimize the downtime. So see, as we can see, for example, इंडिया में हम लोग यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन के लिए क्या होता है, नेक होता है या फिर इसके अलावा एनबीए एक्रेडिटेशन होता है. बट इन द सेम वे जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंडस्ट्री की, तो ये जो 3 कैटेगरीज में बात कर रहा हूँ, फॉरेस्टर, आईडीसी एंड गार्टनर, these are the leading organization who is going to suggest कि कौन सा प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री के लिए बेटर है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं फॉरेस्टर हूँ तो IBM हो गया, अमेजन वेब सर्विस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब के अंदर टीटीसी नाम की जो कंपनी वर्ल्ड लीडर के फॉर्मेट में है, जो कि इंडस्ट्री 4.0 के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है. अगर मैं इन द सेम 2070 का आईडीसी रिपोर्ट देखूं तो इसके अंदर भी अब IBM आगे थी, पीटीसी इज द ग्लोबल लीडिंग कंपनी. ये दीज आर द मेजर लीडर. अगर मैं बात करूं बोस के सॉफ्टवेयर की या सीमेंस की, तो ये लीडर्स नहीं आती, दे आर ट्राइंग टू बी लीडर. इन द सेम वे अगर मैं गार्टनर की बात करूं तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, IBM है, ये लीडर में नहीं है, दे आर ट्राइंग टू बी अ लीडर, क्योंकि वो स्लोली अपने अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद में वो लोग मार्केट में सरवाइव करेंगे. बट अगर मैं रिसेंटली 2020 की अगर रिपोर्ट आईडीसी की, तो उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो लीडर्स ने लेवल पे था, नाउ इट इंक्रीजेस. तो कुछ हद तक वो लोग पीटीसी को बीट कर पा रहे हैं. बट अगेन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पीटीसी और माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन है. दे मेक द टाई अप. माइक्रोसॉफ्ट इज द सॉफ्टवेयर लीडिंग कंपनी, इज द हार्डवेयर लीडिंग कंपनी in the field of Internet of Things or industrial Internet of Things. So they collaborated with each other and then they are making a very huge difference in the market. So in the same way, Infosys and PTC, because हम लोग ने लास्ट टाइम पे देखा इस तरह से कि अगर हम लोग करें तो PTC IoT के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग कंपनी के अंदर आ रहा है. तो इसी वजह से Infosys से उन्होंने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में 2018 में बेंगलोर में लॉन्च किया, ताकि वो आपस में किस तरीके से कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए या अपने मार्केट सर्विसेज को किस तरीके से लोग इंप्रूव कर पाए. इन द सेम वे का विप्रो के साथ टाई अप है. इन द सेम वे कॉग्निजेंट और ने आपस में टाई अप करके अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेशन मोड बनाने के लिए यूज की. और फेब 2080 के अंदर पीटीसी और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों आपस में टाई अप कर चुके हैं. दैट मींस कि अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी किसी वर्ल्ड लीडिंग कंपनी के साथ में टाई अप कर रही है, देन डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस और देयर इज अ ह्यूज थिंग्स दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन. तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों के बारे में करते हैं. अब जैसे कि मैंने कुछ फैकल्टीज मेंबर को मैं जानता हूं, तो मैंने उसमें से ये फील्ड देखो, सब लोग इंजीनियरिंग फील्ड के नहीं है, सब लोग किसी किस फील्ड के, कोई किस फील्ड के है. तो मैं एक समराइज फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग इंडस्ट्री सिनेरियो को समझ सके कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. तो सबसे पहले आप कोई भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बनाते हो तो दीज आर बेसिक ब्लॉक डायग्राम, कि इस ब्लॉक डायग्राम वे में फॉलो करना होता है. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू कनेक्ट लॉट्स ऑफ सेंसर, देन यू हैव टू कनेक्ट IoT हार्डवेयर. एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, सपोज करो कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का में बात करते हो या किसी सीमेंट प्लांट की बात करते हो, किसी वेदर स्टेशन की प्लांट करते हो, आप कोई भी लो, तो वहां पे काफी क्वांटिटी में सेंसर्स होते हैं जो कि IoT हार्डवेयर से कनेक्टेड होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं. यहां तक जो भी टास्क होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, दैट मींस द थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो इट इज द एडवांटेज ऑफ दैट थिंग्स. सो सी और लिसन केयरफुली, यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं
तो जो इंफॉर्मेशन का पार्ट था इसको मैं इसको स्विच करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन मॉडल के थ्रू क्लाउड ऊपर। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा हार्डवेयर का डेटा था इसको मैं क्लाउड ऊपर ले जाने से एडवांटेज क्या मिलता है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे कि एक सेंसर मैंने कनेक्ट किया है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, इंडस्ट्री में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ सेंसर की जो रीडिंग आती है उसको किसी भी तरीके से याद रखना पॉसिबल नहीं होता या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि कोई एक फर्नेस है, फर्नेस का टेम्परेचर बार बार इंक्रीज होते जा रहा है और हमें कूलिंग सिस्टम को ऑन करना है, तो ये हम लोग मैनुअली रीडिंग देख के बार बार उसको सिस्टम को नहीं कूलिंग सिस्टम को ऑन कर सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर उसका प्रिडिक्शन हमें पहले से करना पड़ेगा। और ये प्रिडिक्शन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में लोड्स ऑफ डेटा होगा। इसीलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है बिग डेटा का, जहां आज यूट्यूब पे या फिर आप इंडस्ट्री के अंदर सब जगह सुनते हो कि व्हाट इज द बिग डेटा, व्हाट इज द डेटा साइंस, व्हाट इज द डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे इन सब चीजों का रोल स्टार्ट होता है। ये सारे ऑप्शन अब क्लाउड सर्वर के ऊपर सेंड करने का एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि हमारे हार्डवेयर के पास में जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, वो सिर्फ फ्यू एमबीज के अंदर डेटा को स्टोर कर सकता है। अगर एक चीज में क्लाउड सर्वर के ऊपर ले जाता हूँ तो वही जो मेरा स्टोरेज है वो टीबी या तक स्टोर कर सकता है, जिस वजह से हम लोग कोई भी एनालिसिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज प्रोसेसिंग की बात करूं, मैं बात करूं किसी एप्लीकेशन के एनालिसिस के ऊपर जहां पे मेरे पास में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स के डेटा है, तो वो एप्लीकेशन या फिर मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस की, मैं चाहूँ प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात करूं तो सारे एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ यूजर वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ विजुअलाइजेशन होता है जो कि हम लोग देख पाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि एक मैं वेदर स्टेशन को डिजाइन करता हूँ। अब वेदर स्टेशन और वेदर फोरकास्टिंग का डिफरेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वेदर स्टेशन वो होता है जो आज तक जो कुछ भी वेदर की कंडीशन है उसको हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू। जैसे कि आपने एक्यूवेदर यूज किया होगा तो एक्यूवेदर में आप लोग यही करते हो। तो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इसको ब्लॉक डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करें और कैसे हम कल क्या होने वाला है, कल का मौसम क्या होगा, वेदर की कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी क्या होगी, तो वो हम लोग किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे उस चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। देन आई एम गोइंग टू कवर अबाउट द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ताकि आप लोग उस इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म को और यहाँ पे आप आपस में कनेक्ट कर पाओ। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग ने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, हमें थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। थिंग्स से हम आईओटी हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं। ये आईओटी हार्डवेयर जो नेक्स्ट फेज में जाता है थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट, और यहाँ से हम लोग क्लाउड या लोकल सर्वर की बात करते हैं और फिर हम लोग फाइनली एक डैशबोर्ड लेते हैं जो कि एक एंड यूजर पे डिस्प्ले होता है। अगर मैं वेदर स्टेशन की बात मेरे पास में कोई एक टेम्परेचर सेंसर जो कि हम लोग DHT11 यूज करते हैं, जस्ट इट्स अ नेम, यू कैन यूज काइंड्स ऑफ डिजिटल सेंसर that can be measure temperature or humidity for the weather station। तो यहाँ पे हम उस थिंग्स में हम लोग DHT11 को लेते हैं। फिर हम लोग IoT हार्डवेयर को यूज करते हैं क्योंकि मुझे जो डेटा शेयर करना है वो इंटरनेट पे शेयर करना है, तो इसके लिए मैं एक नॉइसी यूज करता हूँ जो कि एक IoT हार्डवेयर है। देन हम लोग किसी भी वाईफाई कम्युनिकेशन यूज करते हैं ताकि जो कुछ भी हार्डवेयर हो रहा है उसको हम लोग क्लाउड पे शेयर कर पाए। देन ये सारा का सारा जो डेटा ट्रांसफर हो जाता है थिंगवर्स क्लाउड सर्वर के ऊपर। अब थिंगवर्स क्यों यूज करते हैं तो वो मैंने अभी पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, क्योंकि दीज आर द मार्केट लीडिंग कंपनी। पीटीसी की हम लोगों ने बात की थी, उनका जो IoT प्लेटफॉर्म आता है वो थिंगवर्स के नाम से आता है। और फाइनली एंड यूजर पे सिर्फ डैशबोर्ड दिखता है जो हम लोग मेशअप की हेल्प से डिजाइन करते हैं। आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जिससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि इंडस्ट्रियल IoT होता क्या चीज है, और कल इसका प्रैक्टिकल का कुछ पोर्शन भी हैंड्स ऑन करके देखेंगे ताकि आपको बहुत इजी वे में आइडिया लग जाए कि इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म वर्क करता है। सो बेसिकली अगर आप कोई सेंसर देखो तो सेंसर कुछ इस तरीके से दिखने में आता है। आपका IoT हार्डवेयर वाईफाई मॉड्यूल का कुछ तरीका होता है जहां से हम लोग वाईफाई के थ्रू इस डेटा को हम लोग शेयर कर पाते हैं।
किसी भी क्लाउड सर्वर या थिंगवर्क्स के ऊपर, और यहाँ से लोग इस तरीके से डैशबोर्ड दिखता है। जब आप कभी भी मोबाइल में देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखता है। ये जो डैशबोर्ड होता है ये आपके एंड यूजर पे डिस्प्ले होता है कि आपके एंड यूजर में आपने चाहे मोबाइल यूज किया है, लैपटॉप यूज किया, और यहाँ से आप जो भी मॉनिटरिंग कर सकते हो अपने प्लांट की वो आप मॉनिटरिंग कर पाओगे। तो जो वीडियो में जो आपको डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ वो ये डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि थिंगवर्क्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग डेटा एनालिटिक्स करते हैं। एक डाउन टाइम जो वर्ड होता है वो क्या चीज होता है, और उस डाउन टाइम को हम लोग इम्प्रूव कैसे करें। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए क्या यूज किया क्योंकि हम लोग वेदर स्टेशन या वेदर फोरकास्टिंग के बारे में डेली अपने मोबाइल में अपडेट देखते रहते हैं। जनरली जब हमने कोल्ड का टाइम होता है या विंटर के टाइम में होता है या फिर जो समर का टाइम होता है उसमें हम लोग काफी इस चीज को हम लोग अपने मोबाइल की हेल्प से, तो उसी चीज का हम लोगों ने डेमोस्ट्रेशन फॉर्म देखा। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि किस तरीके से एक IoT प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है फ्लोसर्व, जो कि फ्लोसर्व या फिर वाटर मैनेजमेंट के लिए, जैसे हम लोग स्मार्ट सिटी में बात करते हैं कि स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो एक डेमोस्ट्रेशन है कि PTC किस तरीके से किसी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और कैसे उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और डाउन टाइम नहीं आने देता। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वीडियो। Production bottlenecks and mechanical inefficiencies cost global manufacturers billions. The question is, what do they cost to do? By 2020, Gartner estimates that 26 billion highly differentiated devices. So see, here they are talking about the in 2025 there is 26 billion devices going to be connect with the Internet of Things. See, जैसे कि हम लोग अपना मोबाइल है, हमारा मोबाइल आज स्मार्ट है। अब इस स्मार्ट होने की वजह से क्या होता है कि हम जो भी टास्क होता है बहुत इजी वे में कर पाते हैं और हमारा मोबाइल बहुत सारे प्रोडक्शन खुद करके दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अगर वॉक करते हैं, हम लोगों ने कितने स्टेयर्स चढ़े, हम लोगों ने कितने किलोमीटर आज वॉक किया, ये सारे के सारे कैलकुलेशन करके देता है। तो जैसा हमारा मोबाइल है, जो रिस्ट वॉच है, ये आपस में कनेक्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अराउंड जो कि 7 बिलियन है, अब 7 बिलियन के रेस्पेक्ट में 26 बिलियन डिवाइसेस IoT की कनेक्ट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ से हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग अराउंड 3 to 4 डिवाइसेस IoT के यूज कर रहा है। तो वी कैन थिंक कि मार्केट इसका कितना ज्यादा होने वाला है। How effectively and efficiently businesses can deliver actionable intelligence in a typical way to decision makers while determining both their competitive advantage and opportunity for cost savings. The potential of this actionable intelligence is encapsulated in ThingWorks Analytics. So now he is going to talk about that ThingWorks Analytics. Operationalize and embed predictive simulated analytics into the solution for the generation of information is completely automated, enabled from real-time data. See, here we can see there is a lots of data coming. अब ये जो हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे हैं, इसी को हम लोग मैशअप बोलते हैं। तो कल के सेशन में ये सारी चीजें हम लोग हैंड्स ऑन करके देखने वाले, मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि अगर कोई भी अगर इंडस्ट्री है या कोई भी अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं हार्डवेयर का, वो किस तरीके से डेमोस्ट्रेट होता है या ये सारे ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी आप लोग देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने एंड टाइम पे लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाया था डैशबोर्ड, जिसको हम लोग मैशअप बोलते हैं। तो ये जो कुछ भी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इसको हम लोग मैशअप बोलते हैं। और ये सारे जो पैरामीटर है वो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये सब सेंसर्स के डेटा है जो आपके सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस मोटर की एफिशिएंसी 100% है। अब इसके अंदर दो टॉपिक के ऊपर ये लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रेडिक्शन को यूज करके क्या फ्यूचर में हो सकता है, मशीनरी के साथ में कैसे डाउन टाइम आ सकता
है, कैसे एफिशिएंसी डिक्रीज हो सकती है, उसको कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर डेमोस्ट्रेट होने वाली है। ThingWorks Analytics delivers, analyzes, and presents clear, easy to follow system information anywhere. So, how does it work? Let's take a look. Flowserve is the leading manufacturer of flow management products. Their pumps help move, control, and protect the flow of materials in critical industries around the world. If one of these pumps goes down, So see, here we can see Flowserve. These are the world leading company who is dealing in water automation. Similar to those used in circulating water. It has been retrofitted with 6 sensors provided by national instruments. So here he is talking about the different kinds of sensor that is provided by National Instrument. The National Instrument एक company है जो lots of sensor both accuracy industrial point of view से deliver करती है market के अंदर। और ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो कि जो इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है, ये सेम ऐसा का ऐसा डैशबोर्ड हम लोग कल खुद बना के इसको मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये डेटा को हम लोग सेंस करके यूटिलाइज करते हैं। ThingWorks machine learning allows you to do more and get more machine like this. What you're seeing at work here is the automated edge sensor analytics technology behind the platform called. And see here what we can see, here we can see all the data which are coming from the different sensor and motors. It is real time. तो जो कुछ भी हार्डवेयर पे आपके इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ यहाँ पे विजुअलाइज फॉर्मेट पे अपने लैपटॉप पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे सब कुछ शो होता है। अब यहाँ पे इन्होंने डेमोस्ट्रेट करके इसी चीज को शो कर रखा है। Part of the ThingWorks analytics capabilities. Each sensor reading that has a learning flag above it tells ThingWorks analytics to learn normal operating conditions. Arguably, the automated process does not require you to determine any hard and fast rules. It learns in real time about its environment, determining what's normal and normal from the sensors themselves. The software then correlates the information with peak efficiency conditions. The OK indicators you see here tell you the sensors have learned what normal is and are functioning well with no anomalies detected. To the left, you'll see future predictions, 3 outcomes predicted by the platform's. See, if the things is working very fine, then we can predict that after 356 days, the whole operation is going to be failed. यहाँ पे हम बात करें मोटर की, एक मशीन की लाइफ कितनी होती है, तो एक मशीन की लाइफ यहाँ पे शो करने की कोशिश करें कि आफ्टर 1 ईयर ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन, फ्रिक्शन की वजह से या फिर उस मोटर की यूटिलाइजेशन की वजह से उसके जो ब्रशेस है वो सब आफ्टर 356 डेज के बाद में फेल हो जाएंगे। बट नाउ आई एम गोइंग टू डू इंटेंशनली कि भाई अगर मैं कुछ चेंजेस करूं और उस चेंजेस की वजह से ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाऊं कि जो प्लांट के अंदर मेरा कोई वर्कर है वो वर्कर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या फिर उसने कुछ चेंजेस कर दिए हैं या फिर कोई ऑपरेशन वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा, क्योंकि दे आर द लेमैन, वो नहीं समझते कि जो थिंग्स होती है, जो चीजें होती है कैसे वर्क करेगी प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे अपने स्क्रीन पे देख के कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है रियल टाइम के अंदर और उसको हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो वही डेमोस्ट्रेट करके यहाँ पे ये लोग शो करेंगे। Thing predictor technology. The automation you're witnessing real time is ThingWorks Analytics evaluating the remaining number of days until each of these failures is likely to occur next. What's truly extraordinary about all of this is that there is no need for anyone to be constantly monitoring the machine. It is instead being self-evaluated all the time at a rate. So see, here they are talking about the self-evaluated 13,000 reading per second per sensor. That means within a 1 second, जो हमारा डेटा एनालिटिक्स टूल है PTC का ThingWorks नाम से, वो 13,000 सेंसर्स के डेटा को रीड कर पाएगा और रीड करने के साथ साथ उसके 13,000 वैरायटी या को भी उसको सेंस कर पाता है। So we can assume कि ये कंपनी ने अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो कितना फास्ट और कितना एफिशिएंट किया है।
rate of 30,000 readings per second per sensor. So again, now they are talking about the two problems. The first problem is the flow reduction. For example, लेट एज्यूम कि हमारे पूरी की पूरी स्मार्ट सिटी है, जो भी वाटर सप्लाई होता है, अभी क्या होता है, एक मैनुअल एक पर्सन आता है, वो वॉल को ओपन करता है और हमारे घर में सप्लाई आना स्टार्ट होती है। कई बार हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है कि यार आज तो पानी का फ्लो बहुत कम है, कल बहुत प्रॉपर। कुछ लोग मोटर यूज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं यूज कर पाते। तो इन सब चीजों को ये हम लोग प्रेडिक्ट करके कैसे चेक कर पाए, उन सब चीजों के ऊपर बात करेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिर्फ अगर फ्लो का रिडक्शन में कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉल को प्रॉपर नहीं होता, अगर मैं वॉल को हाफ ही, जिसकी वजह से क्या जाएगा, जब वाटर का फ्लो कम जाएगा तो डेफिनेटली आपके घर वाटर की सप्लाई प्रॉपर होने वाली है ही नहीं। तो इस अब ये मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक जो एक पर्सन है वो कर देता है, क्योंकि उसने अपने लेजीनेस के कारण उसने वॉल को प्रॉपर वे में नहीं ओपन किया, जिसकी वजह से उसकी मशीनरी भी खराब होगी, उसका पूरा का पूरा सिस्टम भी फेल हो सकता है। तो कितना कुछ हो सकता है, वो सब कुछ यहाँ पे ये लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जस्ट हैव अ लुक। We've turned on the pump rig to demonstrate what happens if something changes or goes wrong. Well, let's make a few things go wrong on this pump to show ThingWorx analytics working in real time. We're going to simulate a reduction in flow by closing this valve. So see, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वाटर का फ्लो का रिडक्शन हम लोगों ने कम किया। जैसे ही हम लोगों ने ये जो वाल्व है उसको हम लोगों ने प्रॉपर ओपन ना करके इसको हाफ ही ओपन किया, जिसकी वजह से कंप्लीट हार्डवेयर में इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। डेफिनेटली वर्क कर रही है, मोटर कर, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं या एनालिसिस कर पाते हैं कि अब जो मेरा कंप्लीट हार्डवेयर है, कंप्लीट मेरा सिस्टम है, वो कितने टाइम बाद में फेल हो सकता है। As you can see, the software immediately responds to the change of flow. See, जो भी टास्क अपने वहां पे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल की जो एफिशिएंसी है वो 43% रह गई है फ्रॉम द 100%। मैं अगर कंप्लीट मैकेनिकल सेल की बात करूं तो जो पहले 356 डेज पे आ रहा था वो 185 डेज के अंदर ही फेल हो जाएगा। यानी कि हम आप सिर्फ एक वॉल का ऑपरेशन प्रॉपर ना होने की वजह से कितना बड़ा फेलियर हो सकता है, उस चीज को हम लोग समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है बेरिंग की, कि अब इसकी वजह से ये जो मोटर के जो बेरिंग्स लगे हुए हैं, डेफिनेटली उनका भी एक टाइम होता है, वो टाइम किस तरीके से डिक्रीज हो सकता है उसके बारे में भी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कंप्लीट सिस्टम की, तो कंप्लीट सिस्टम मेरा 6 डेज में फेल हो जाने वाला है, सिर्फ एक वॉल को प्रॉपर ना ओपन करने की वजह से। अब जनरली हम लोग अभी के टाइम में तो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको, कोई बात नहीं, आज वाटर का फ्लो कम आया, इट्स नॉट अ बिग डील। But for the industry point of view, it's a really big deal. What's happening is that ThingWatcher is automatically detecting the flow problem and sending real-time notifications or alerts. Critical sensor readings are being flagged, pump efficiency is dropping, and the impeller is at risk of failing if the problem is not immediately addressed. When maintenance is delivered, the numbers return to normal. So as you can see, the problem can be resolved before it becomes an expensive pump failure or serious downtime occurs. See, तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे कि सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कितना बड़ा फेलियर हो सकता था। उस फेलियर को हम लोगों ने यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस से कैसे उसको हम लोगों ने रोक लिया। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम दे आर टॉकिंग अबाउट द पंप मिसअलाइनमेंट, कि जो हम लोगों ने मोटर है और जो पंप है उसका जो हम लोगों ने वाटर का फ्लो हो रहा है, तो हम लोगों ने पाइप को अगर प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में कनेक्टिविटी नहीं करें तो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। दे आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। Let's throw another problem at the system and see how it works. I'm going to shift the alignment of the pump by lifting the main housing through the pull of this black bar. You can hear something is wrong. But let's imagine a remote monitoring situation. सी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मोटर के अंदर से एक साउंड आनी जनरेट होगी, बट इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे इतने साउंड्स ऑलरेडी जनरेट होते रहते हैं, तो वहां पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है।
उस पोजीशन पे अगर हमारे सामने अगर ये सारे एनालिसिस को अगर हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो हम बहुत इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे मिस अलाइनमेंट हुआ है। And there's no technician around to hear this, so you need to rely on real-time monitoring. ThingWatcher is reading anomalies to flag negative changes to the pump efficiency gauge, which immediately triggers. The system can also simultaneously send an automated phone call to a technician, alerting them of the problem. Once the problem is resolved, the numbers return to their normal state. You can imagine the level of control and तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ना कि जैसे ही हम लोगों ने हाउसिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कहा, अलाइनमेंट प्रॉपर हुआ, ये जो रीडिंग है, करंट की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है, फ्लो की वैल्यू है, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगी। तो ये सारा का सारा इस वजह से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री को ना सिर्फ ऑटोमेशन मोड में डाला है, बल्कि डेटा एनालिटिक्स के हेल्प से उसको हम लोग स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। और जितना ज्यादा हम लोग इसको स्मार्ट बनाते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए सही रहता है कि हमारे पास में डाउन टाइम नहीं आए और हमारे जो भी ऑपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए इंडस्ट्री का। and visibility this technology can provide within your central fleet, offering an incredibly responsive view of the usage and condition. See, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया सिर्फ एक पोजीशन के अंदर। Now they are going to demonstrate about the US. कि US के अंदर अगर डिफरेंट सिटी के अंदर ये स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है स्मार्ट सिटी के अंदर, तो कहाँ पे किस पंप की किस मोटर की क्या कंडीशन है, कितने टाइम में कौन सा मोटर या कौन सा पंप फेल होने वाला है, कहाँ की क्या एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, ये सब हम सिर्फ एक स्क्रीन पे बैठे बैठे विजुअलाइज कर पाएंगे। तो जस्ट यू कैन थिंक किस तरीके से जो हमारा सिटी है, जो हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये सब चीजें इसलिए पॉसिबल है बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्क ऑन दैट कंडीशन, और उन्होंने सब चीजों को ऑलरेडी डिजाइन और डेवलप करके रख रखा है। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर जैसा भी प्लेटफॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी भी, विप्रो जैसी भी बड़ी कंपनी भी इन पीटीसी या थिंगवर्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूरा रिसर्च करने के लिए इतने टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं, वो सिर्फ इतने से मतलब वो लोग क्या करते हैं कि ये पोर्शन पीटीसी उनको सॉल्व करके दे देती है, वो अपना सॉफ्टवेयर के अंदर इंडस्ट्री है, तो वो सॉफ्टवेयर और इस हार्डवेयर में मिलके और वो एक एंड यूजर का बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर करके बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे पाते हैं। सो दीज आर द रीजन of pumps all around the world from one location. This demonstration featuring PTC's predictive service solution is just one example of the hundreds of ways the transformative power of machine learning delivers value. Through that power, the ThingWorks platform enables unprecedented access to connected intelligence synchronized to your machines. A platform of data analysis and systems learning delivered with utter simplicity. Out of the box, the platform helps machines teach themselves using information to predict, detect, and even fix production hangups. So definitely हम लोग यहाँ पे ये इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये कर पाए कि हम लोग जो आज बात करते हैं ना आज की लीडिंग के अंदर कि भाई क्यों डेटा साइंस इतना ज्यादा पॉपुलर हुए जा रहा है। जब कभी भी हम लोग कहते हैं ना कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अगर आपको डेटा साइंस आता है, आपको डेटा एनालिटिक्स आता है, तो आपके पास में कई ऑप्शन है। वो इसलिए ऑप्शन है क्योंकि हर इंडस्ट्री आपस में इसी के ऊपर वर्क करती है, क्योंकि आज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि किस एरिया में कहाँ पे अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका कंजप्शन कहाँ हो रहा है, तो वहां से बहुत इजी वे में वो समझ सकते हैं कि उनको प्रोडक्शन कितना इंक्रीज कर रहे हैं। आज इस कोविड के सिचुएशन में ये बहुत आ रहा है कि जो कुछ वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही। जहाँ हम लोग रेमडेसिविर की बात करें वो मार्केट में है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर सेम उसी चीज को अगर इस प्लेटफॉर्म को लोग ऑप्ट करते तो वो बहुत इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रियल में रिक्वायरमेंट कितनी जनरेट हो रही है और कहाँ पे
कितनी ज्यादा सप्लाई करनी है, कहाँ पे कितनी कम सप्लाई करनी है, वो सब चीजें वो एक ही लोकेशन पे बैठे बैठे वो सब एनालिसिस कर पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब अपने पास में लोट्स ऑफ डेटा होंगे। जितने ज्यादा डेटा उतना ही प्रिडिक्ट करना अपने लिए आसान होगा, और जितना ज्यादा प्रिडिक्ट करना आसान होगा उतना ही ज्यादा उस कंपनी की होती है। तो इस वजह से हर कंपनी आज डेटा के ऊपर रिलायबल होने वाला है। इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल में बात करूं, जैसे कि अगर हम लोग शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं, अगर हमें ये पता लग जाए कि क्या ऑफर आ रहा है और हम किस कंपनी या किस कंपनी के हम लोग गारमेंट्स को यूज करते हैं, और अगर उसी कैटेगरी के उस पे कोई डिस्काउंट आ रहा है, अपने पास में जैसे हम मॉल के अंदर या एंटर करते हैं तो वहां पे अपने पास में कोई मैसेज अलर्ट सिस्टम आता है, या अपने पास में कोई मैसेज आता है कि भाई पीटर इंग्लैंड के अंदर आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है। तो दीज आर रिलायबल ओनली ऑन द डेटा। अगर उनके पास जितना डेटा होगा उसी बेस पे वो लोग डिसीजन ऐसे ले पाते हैं। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फोर्स यू इनडायरेक्टली हाउ वी कैन बाय। ये सेम थिंग्स, अगर आपने गलती से अमेजन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट सर्च किया हो और वो आपको पसंद आता है, और जब आप दूसरी वेबसाइट पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई भी वर्क करते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो लोग डिस्प्ले कराते हैं कि आपने ये सर्च किया था या फिर इस पे इतना डिस्काउंट आ चुका है। दे आर इनडायरेक्टली फोर्स यू टू बाय दैट प्रोडक्ट। एंड हाउ इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने जब वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, वहां से उन्होंने उस जो भी आपने विश लिस्ट में डाला, जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया, उसको इवेल्युएट करके वो जहां कहीं भी आप नेक्स्ट मूव कर रहे हो, किसी कंप्यूटर के ऊपर या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर या अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहां पे वो आपको उसको प्रेडिक्ट करके वो डेटा को कलेक्ट करके आपको शो कर पा रहा है। सो दीज आर द ब्यूटी ऑफ डेटा साइंस। तो इस वजह से द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई इन द इंडस्ट्री। तो इस वाली वीडियो में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि एक इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, एक इंडस्ट्री के अंदर कैसे कैसे सॉल्व होती है, और जो हम लोग बात करते हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन किस तरीके से हमें एक ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट है मार्केट के अकॉर्डिंग। और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे कि पीटीसी इज द नंबर 1 इन द आईओटी प्लेटफॉर्म, बट मैन्युफैक्चरिंग में पीटीसी नहीं है, सॉफ्टवेयर में नहीं है। सॉफ्टवेयर में आज भी जो इन्फोसिस है, विप्रो है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, दे आर लीडिंग इन द डिफरेंट एरिया। तो सबका एक्सपर्टीज अपना अलग अलग है, और मार्केट में क्या चल रहा है, अगर हम लोग अपने स्टूडेंट को हम लोग ना ट्रेन कर पाए तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आउट ऑफ द मार्केट, सेम लाइक अ डायनासोर। इस वजह से हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और साथ के साथ साथ हमें अपने स्टूडेंट को भी जो न्यू प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री के, उसके लिए भी उनको ट्रेन करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी कॉस्टली सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स नहीं है। दे आर गोइंग टू चार्ज lots of million and millions of rupees, but just tomorrow I'm going to demonstrate some portion or some part so we can understand how industry work and how we can take the different kinds of decision. So मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ वो ये डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, किस तरीके से हम लोग रोबोटिक्स के हेल्प से नए नए टास्क को एफिशिएंट वे में सोल्व कर पाएंगे। तो उस चीज के ऊपर हमारा नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो ये। तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर हम लोग इसी के ऊपर वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अपना थिंगवर्क्स प्लेटफॉर्म है उसके बेनिफिट जो प्रीवियसली कुछ समझ पाए हो, हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग डाउन टाइम को कैसे रिड्यूस करेंगे। मैं स्टार्टिंग से इस शब्द के बारे में बात किया था कि डाउन टाइम क्या होता है। इस डाउन टाइम को थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग पर डे 10 मैन्युफैक्चरिंग करती है, और अकॉर्डिंग जो भी फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी कंपनी का कार पसंद आई तो मैं कहा कि यार अभी तो शोरूम में ये कार अवेलेबल नहीं है, बट आफ्टर 7 days वी विल डिलीवर। तो हम लोग क्या करते हैं, टोकन मनी दे के आ जाते हैं और अपनी कार को बुक करके आ जाते हैं। बट थिंक कि ऐसा क्या हुआ कि किसी वजह से
अगर जो कार की मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्रीज होगी, पर डे वो लोग 10 कार मैन्युफैक्चर करे और 10 की जगह उन्होंने 7 ही किया, 8 ही किया, तो ये जो एक क्वांटिटी है 10 की, वो 10 की क्वांटिटी अगर डिक्रीज होके 7 या 8 या 5 पे रह जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाउन टाइम। अब ये होता क्यों है? हो सकता है कि कोई मशीनरी खराब होगी, हो सकता है कि कोई एक सेक्शन वर्क नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन जो है वो उतना ना हो पाया, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार की कीमत में ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए भी मानता हूँ, 10 कार यानी पर डे में 1 CR की कार मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और अगर किसी तरीके से मैंने 50% किया, या इट मीन्स कि मैंने एवरी डे मैंने 50 लाख का लॉस कर दिया, और ये जो 50 लाख के लॉस करने के बजाय अगर मैं इस कंप्लीट सिस्टम को ऑटोमेशन मोड में डाल दूं और मैं ये प्रिडिक्ट कर पाऊं कि कब कौन सा मोटर, कब कौन सी मशीनरी मेरी खराब हो सकती है, और उसको मैं पहले ही रिप्लेस कर दूं, तो वो डाउन टाइम नहीं आएगा। और ये तब पॉसिबल है जब हम लोग इंडस्ट्री 4.0 या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में इसको वर्क करें। तो यही सब चीजें इस वीडियो के अंदर ये लोग डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए। जैसे भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई आपको टेक्निकली समझने की चीज होती है, जस्ट नोट डाउन, आफ्टर द वीडियो वी विल डिस्कस इट, सो प्लीज। The factory represents a huge opportunity for the application of IoT technology, one so big and so real that the governments of the world's 3 largest economies have named it. It's called Smart Manufacturing in North America and Made in China 2025 in China. The European Union refers to it as Industry 4. See, चाइना ये कोशिश करता है कि all the product is going to made like a made in China, जो कि 2025 में बात करते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका है या जो पूरा कंप्लीट यूएस कंट्री है, दे आर रिलाइंग ऑन द स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो यूरोप कंट्री है, दे आर वर्किंग ऑन द इंडस्ट्री 4.0। तो इसके हेल्प से किस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री को और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हो, और जो पीटीसी है वो कैसे इसमें हेल्प करता है, उस चीज के बारे में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इस वीडियो के अंदर शो होने वाला है। 4.0, as this wave of impending change represents the 4th industrial revolution. However, if you've ever walked a factory floor, you've seen that the machinery is incredibly diverse. Production equipment originates from many different vendors and connects to different systems that aren't engineered to easily communicate with each other. And yet, these production assets are all generating huge volumes of operational data. Against this backdrop of this complexity and untapped information, manufacturers still need to achieve continuous operational improvement, which is absolutely critical to delivering innovative products on time at the right cost, all while ensuring high quality. To address this challenge and deliver customer outcomes discussed in the manufacturing transformation journey, PTC is extending its market-leading industrial IoT platform, ThingWorks, and is introducing a new set of starter apps allowing factories to rapidly tap into the power and flexibility of IoT in the factory. The ThingWorks IoT platform allows you to get more from the equipment and systems. There's no costly and time-consuming rip and replace of your existing investments. The ThingWorks manufacturing apps allow you to quickly deploy industrial IoT. यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं कि जो थिंगवर्क्स प्लेटफॉर्म है, अगर आप कोई भी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हो तो वो लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं। वो ऑलरेडी रेडीमेड कई टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता। बहुत कम टाइम के अंदर कैसे एफिशिएंटली आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिफरेंट कंपनी के साथ में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो गैजेट्स बना के देते हैं, उनके साथ में ऑलरेडी टाई अप कर रखा है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारे प्रोडक्शन एनालिसिस, उनके सेंसर्स के वैल्यू को कैसे रीड करना है, कैसे एनालिसिस करना है, दे ऑलरेडी वर्क ऑन दैट कंडीशन। सो अगर आपको कोई भी, सपोज करो कि अगर आपको बेवरेज कंपनी या फिर आप कोई
वाटर प्लांट स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो नो डाउट आपको ऑटोमेटिकली वाटर फिलिंग के लिए बोतल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको कन्वेयर बेल्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो पीटीसी क्या सजेस्ट करती है कि आप इस कंपनी का कन्वेयर बेल्ट ले लो, हमारे पास में ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को, इस पैकेज को आप परचेज करो, उसके बाद में आपको हम चार्जेस करेंगे ईयरली बेसिस पे, यानी हम चार्ज करने जा रहे हैं एक साल में एक बार। यानी कि जो हम लोग किसी भी प्लांट को स्टेब्लिश करने से पहले जो हमारी जो रिसर्च की जो कॉस्ट आएगी, क्योंकि कोई भी प्लांट एक दिन में वर्किंग कंडीशन में नहीं आता, हमारे कुछ इंजीनियर्स भी होंगे 6 महीने तक, साल भर तक या कुछ मंथ तक उसके ऊपर डिवोट करेंगे, कंप्लीट सिस्टम को वो लोग रेडी करेंगे, फिर कहीं जाकर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो पीटीसी क्या हेल्प करता है कि आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट वो लोग फुलफिल कर देते हैं। वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि किस किस कंपनी का आप कन्वेयर बेल्ट लो, किस किस कंपनी के आप ऑटोमेटिक जो वाटर वो यूज कर सकते हो। अगर आप वाटर की क्वालिटी को, कंटेंट को चेक करना चाहते हो तो कौन से, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया, फ्लो सर जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, वो ये सारे फैसिलिटी देते हैं। सो दे आर बेसिकली दे आर ऑलरेडी टाई अप विद डिफरेंट कंपनी, और इस वजह से सिर्फ हमें उनके पैकेज को परचेज करना होता है, हमें हार्डवेयर एक बार परचेज करना होता है, हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी कि उसके सॉफ्टवेयर पे, उसके प्रोग्रामिंग पे, उसकी फंक्शनिंग पे वर्क नहीं करना होता है। हम सिर्फ पीटीसी का एक पैकेज लेंगे, उस पैकेज के साथ में वो पूरा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा, और जैसे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा तो जो काम हम लोग 6 मंथ के अंदर जो हमारी जो प्लांट रनिंग कंडीशन में आ रहा था, वो विद इन 1 वीक और विद इन 10 डेज और विद इन अ मंथ वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। सो दैट इज द रीजन एवरीवन इज गोइंग टू शिफ्ट on that industry 4.0 और in particular ThingWorks IoT platform के ऊपर क्यों switch करने जाते हैं? With very limited resources and without disruption to today's operations. In order to demonstrate these apps, we've built a fully functioning mock assembly line. So see, यहाँ पे ये लोग इसी चीज को ये लोग डेमोन्स्ट्रेट करके शो करेंगे कि रियल टाइम डेटा कैसे रिसीव करेंगे। यहाँ पे ये जो आप हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो एक मशीन लगी हुई है, ये जो पीटीसी द्वारा डेवलप है, तो ये किस तरीके से ये मशीन सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करके शेयर कर पाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट कंपनी के जो पीएलसी से, पीएलसी इज द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये एक ऐसा हार्डवेयर होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होता था, बट अभी स्लोली दे आर गोइंग टू आउट ऑफ द मार्केट। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, जी फानुक का नाम सुना होगा, सीमेंस कंपनी का नाम सुना होगा, एलन ब्रैडली का नाम सुना होगा। तो दीज आर द वर्ल्ड लीडिंग कंपनी दैट वर्क इन द पीएलसी। और ऑटोमेशन में कुछ साल पहले इन्हीं के हेल्प से सारा का सारा ऑटोमेशन होता था, बट जैसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट में आया, तो ये सारा का सारा जो कनेक्शन वायर्ड के थ्रू होता था, ये सारा का सारा कनेक्शन वायरलेस होने लग गया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव होने लगी। दूसरी बात, अभी तक वो सारा का सारा डेटा वो लोग लोकल सर्वर पे स्टोर करते थे, बट जैसे ही वो सारा का सारा डेटा क्लाउड पे पहुंचा, तो डिफरेंट टूल्स से हम लोगों को एनालिसिस करना आसान हो गया। तो ये सारी फैसिलिटी किस तरीके से पीटीसी ने शो की है, वही इस वीडियो के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट होने जा रहा है कि कैसे ये फंक्शनिंग करती है। In our Needham, Massachusetts headquarters, it has a robot, a pneumatic system, a conveyor system, a vision system, and a number of secondary sensors as shown on this compressor, which provide real-time readings of critical parameters. So here in this video we can see there is a lots of computer vision devices, कन्वेयर बेल्ट को हम लोगों ने देखा, कोई भी जो से उसको हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है। ये सब चीजें जो भी हार्डवेयर पे हो रहा है, वो कैसे इसको विजुअलाइज करके कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं,
और किस तरीके से इसको ऑटोमेशन मोड में डाल रहे हैं इंडस्ट्री को, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर डेमोस्ट्रेट होने जा रहा है। The supply station in the back is bringing in our raw materials, black and white discs. The robot picks up the parts and assembles them with precision. The resulting assembly is then sent to the quality station, where a vision system checks the quality of each assembly by validating proper alignment of the parts. While this mock assembly line represents only a fraction of the true complexity manufacturers are faced with every day, it does a nice job of illustrating the obstacles that ThingWorx is designed to overcome. In the following video segments, you'll discover how the ThingWorx manufacturing apps deliver real-time operational intelligence to optimize efficiency in the factory and unlock unprecedented time to value at all levels of the shop floor. Let's start with Controls Advisor. A single unit of manufacturing equipment today generates terabytes of data that can be used to understand its past, current, and even future performance. According to Gartner research, over 70% of that data goes unused when it could be a key to understanding quality and performance issues on the factory floor. Today, we'll show you how to access that data and unlock its value with Controls Advisor, a part of the ThingWorx. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया जो वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट मैनेजर है वो वर्क कर रहा है, अगर कोई सुपरवाइजर है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसको कितना, एक सुपरवाइजर को कितना कंट्रोल देना है, एक ऑपरेशन मैनेजर को कितना कंट्रोल देना है, एक वर्कर को कितना कंट्रोल देना है ऑपरेशन के लिए, तो वो सारा का सारा जो एनालिसिस है और किसको कितना कंट्रोल देना है, ये सब चीजें थिंग कंट्रोल एडवाइजर के थ्रू हम लोग परमिट कर सकते हैं, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं वो कैसे अपना डिसीजन ले पाए, कैसे अपना करेक्शन कर पाए ताकि डाउन टाइम ना आए, प्रोडक्शन ज्यादा हो, उन सब चीजों के ऊपर यहाँ पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। और ये सारी फैसिलिटी जो थिंगवर्क्स है ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। Its manufacturing apps. PTC has developed the manufacturing transformation journey to help companies. यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से हम सब चीजें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आज के सिनेरियो में क्या होता है कि जो भी ऑटोमेशन होता है वो रियल टाइम के ऊपर सारे के सारे डेटा रिसीव होते हैं। जो नेक्स्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे आते हैं, वो क्या काम करते हैं कि वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस, जो मैंने बात की पहले डेटा साइंस के, डेटा एनालिटिक्स की, वो वर्क करेंगे। ये लोग शो करने जा रहे हैं एआर इनेबल। ये ऑगमेंट रियलिटी क्या चीज है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दीज आर द न्यू टर्म्स फॉर यू, इट माइट बी पॉसिबल। सो आर्गुमेंट रियलिटी क्या होती है कि सपोज आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि जो गूगल मैप आ रहा है, गूगल मैप में एक फीचर आने वाला है जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया होगा कि पहले तो क्या होता था कि हम लोग सिर्फ डायरेक्शन देख पाते थे, किस डायरेक्शन में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ तक पहुंचना है। अब क्या हो रहा है कि आप कैमरा को ऑन करो, जैसे ही आप कैमरा को ऑन करते हो तो गूगल मैप आपको ये भी कनेक्टिविटी दे देता है कि सामने क्या दिख रहा है, उसकी गूगल मैप के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है और वो ये भी बता पाएगा कि आपको कौन सी गली में टर्न करना है, किस पोजीशन पे आपको पहुंचना है। तो ये सब चीजें तब पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम करती है, ऑगमेंट रियलिटी। तो ऑगमेंट रियलिटी का क्या काम करती है, सिंपली आप जैसे अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करते हो, वो कैमरा से जो भी इमेजेस जो वो कैप्चर करता है वो उसको एज ए वीडियो फॉर्मेट में, एक वीडियो कैमरा के फॉर्मेट में उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे ये लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि सिर्फ आप अपने कैमरा को ऑन करोगे, वो सब चीजें बता देंगे कहाँ पे कौन सा सेंसर कनेक्ट है, किसकी क्या फंक्शनिंग है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है,
तो ये सारा के सारा एनालिसिस यहाँ पे अपने आप ही वो लोग शो कर देते हैं। और फिर उसके बाद में हम आते हैं आउट परफॉर्मेंस, कि हम लोगों ने सपोज करो कि मैंने जो एक कार का एग्जांपल लिया कि अगर हम लोग पर डे 10 कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो 10 कार से हम लोग 11 कार्स 20 कार्स पर डे पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें। वो तब पॉसिबल होता है जब हम लोग कंप्लीट जो मेरा इंडस्ट्री है वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करे और वो कैसे अप लेवल के ऊपर शिफ्ट हो। तो ये बात करेंगे हम लोग आउट परफॉर्म के बारे में। तो ये लोग डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से इन तीनों कैटेगरीज को ये लोग एक्सप्लेन करना Chart their course to continuous operational improvement through digital manufacturing, real-time intelligence, and predictive analytics. Controls Advisor directly supports business outcomes like unified connectivity and real-time issue identification, which can be found in the understand stage of the manufacturing journey. As we've seen in the manufacturing demonstrator introduction, our manufacturing assembly demo contains a number of assembly line assets. The various systems that make up the line are equipped with both primary and secondary sensors. Primary sensors are sensors that come installed on purchased assets, while secondary sensors, also referred to as optimization sensors, are installed at the factory site and may collect data on things like environmental conditions and other factors that impact equipment performance. In our example, the robotic arm comes with a number of positional sensors. These types of assets are controlled by traditional PLCs, or programmable logic controllers. In our demo, the ये जो हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से पीएलसी दिखती है, तो आप जस्ट इसको देखिए यहाँ पे कि जो रोबोटिक आर्म है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर्स को यूज किया है। जैसे कि मैंने आपको डेमोस्ट्रेट दिया था वेदर स्टेशन में, कुछ इस टाइप का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर था। हम लोगों ने कंप्रेशर की बात की, वो जो अभी इस वीडियो के अंदर शो कर रहे हैं। तो दीज आर द सेंसर्स। ओके, हम लोग कन्वेयर बेल्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटी सजेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग एचएमआई की बात कर रहे हैं। एचएमआई क्या होता है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस, कि आपको जो भी ऑपरेशन हो रहा है आप अपने मोबाइल के हेल्प से या फिर अपने टैबलेट के हेल्प से उसको आप चेंजेस कर पाओ। जैसे कि आपके मोबाइल पे जो फ्रंट पैनल पे जो स्क्रीन आती है वो एचएमआई का ही एग्जांपल है। दैट मीन्स ह्यूमन मशीन इंटरफेस, कि आप एक ह्यूमन मशीन के साथ में, यानी कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के साथ में कैसे आप डील करते हो या कैसे उसको सेलेक्ट करते हो, कैसे आप व्हाट्सएप ऑन करते हो। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एचएमआई। जो नेक्स्ट लेवल पे आता है वो आता है अपना पीएलसी। जैसे कि यहाँ पे ओमरॉन की पीएलसी की बात कर रहे हैं, एनआई जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट के प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपस में कनेक्टेड होती है सेंसर से। तो जो आपको मैंने पहले जो डायग्राम शो किया था जिसमें मैंने बात करी थी एक सेंसर्स की, फिर मैंने बात की थी आईओटी हार्डवेयर की। तो यहाँ पे जो आईओटी हार्डवेयर है वो एज ए पीएलसी वर्क कर रहा है। फिर यहाँ से हम लोग थिंगवर्क्स प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विच करते हैं। यहाँ तक जो भी टास्क हो रहा था वो ऑटोमेशन हो रहा था, और इस ऑटोमेशन से अगर हमें स्मार्ट बनाना है तो इसके लिए हमें डेटा एनालिटिक्स करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पीटीसी एक कैफवेयर सर्वर प्रोवाइड करता है। अब कैफवेयर सर्वर क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओमरॉन की पीएलसी के ऊपर वर्क करना चाहते हो तो उनका ओमरॉन की पीएलसी का जो आप डेटा है आप डायरेक्ट रिट्राइव नहीं कर पाओगे अपने सिस्टम के अंदर। तो कैफवेयर सर्वर क्या काम करता है? थिंगवर्क्स ने कैफवेयर के थ्रू इस ओमरॉन के पीएलसी इस कंपनी के साथ में टाई अप कर रखा है कि वो आपको क्या देता है? एक सॉफ्टवेयर देता है। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को रन करोगे तो ये ओमरॉन की पीएलसी जो भी डेटा रीड कर रही है वो रीड करके आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे सेंड कर देगा। अगर आपके पास एक कैफवेयर सर्वर नहीं है दैट मीन्स कि आप इसके डेटा को रीड नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हाईली सिक्योर। तो कैफवेयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो आपने डिफरेंट कंपनी के आईओटी हार्डवेयर है, जो पीएलसी है, उस पीएलसी के डेटा को कैसे हम लोग रीड कर पाए अपने सिस्टम पे, ताकि जो भी Dilip sir, sorry to interrupt you. I just want to tell you that you can summarize your today's session till 1:10 and then you can continue from tomorrow also. Yeah, ma'am, no problem. Yeah. Okay, sir. See, तो यहाँ पे ये वर्क करेगा किस तरीके से कैफवेयर सर्वर, और यहाँ से फिर अपने अगर अपने पास में डेटा आ गया हम लोगों ने रीड कर पाया तो हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट
क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक ऑपरेटर के पास हमें कितने फंक्शनिंग देनी है या कितने राइट्स देने हैं, एक मेंटेनेंस इंजीनियर के ऊपर कितने राइट्स देने हैं, एक प्लांट मैनेजर कितना वर्क करेगा, एक कंट्रोल इंजीनियर कितना वर्क करेगा। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कंट्रोल एडवाइजर की, प्रोडक्शन एडवाइजर की, एसेट एडवाइजर की या ऑपरेशन एडवाइजर की, तो ये सारी फंक्शनिंग जो थिंगवर्क्स है ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करवाता है, जिसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन की हेल्प से इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। PLCs are connected to our ThingWorx server via Kepware, giving us immediate visibility into the status of these assets and sensor readings. The Controls Advisor app makes it very easy for a controls engineer to configure those assets and monitor their status and associated tags. Legacy equipment that may not be initially equipped with sensors can be very rapidly outfitted with secondary sensors and deliver immediate visibility of assets to the controls engineer. For example, in our demo, we've equipped the pneumatic system, the conveyors, and compressor with pressure, airflow, vibration, and motor temperature sensors. These sensors are connected through a connectivity gateway, in this case, a National Instruments MyRio. Bringing visibility by connecting this new sensor data to ThingWorx can be done either through Kepware or by connecting directly into ThingWorx. Controls Advisor gives you real-time visibility into your OPC server and notifies you instantly about device connectivity errors. Controls Advisor is fast to deploy, and you can download and install this app and visualize your shop floor data in as little as 1 hour, using it to set alarms that can trigger email and text message notifications. Manufacturers can reduce downtime and increase production output quickly without sacrificing quality and without having to rip and replace their existing systems, driving immediate value to their companies. In the next segment, we'll see how ThingWorx can unlock additional value for your maintenance teams and plant operations. सी, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पीटीसी आईटी प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है वो हमने देख लिया, जो एक कंट्रोल एडवाइजर कैसे काम करता है वो देख लिया हम लोगों ने। अब एक एसेट एडवाइजर क्या काम करेगा, प्रोडक्शन एडवाइजर क्या काम करेगा, वो इस वीडियो के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये देखा अभी तक कि एक इंडस्ट्री जो आईओटी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विच करते हैं उसके हेल्प से क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। हम लोगों ने जो डाउन टाइम था उस डाउन टाइम को किस तरीके से हम लोगों ने रिड्यूस किया ताकि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। हम लोगों ने आउटपुट क्वालिटी को इंप्रूव किया, साथ के साथ हम लोगों ने ये कहा कि बल्क प्रोडक्शन तो हो लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एमआई का फोन या एप्पल का फोन अगर आप 1000 ये लोग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और गलती से एक या दो भी अगर मोबाइल खराब आ जाता है तो हम लोग रिव्यू देखते हैं कि कितना नेगेटिव होता जाता है। तो उस नेगेटिव रिव्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बट जो आईओटी प्लेटफॉर्म जो थिंगवर्क्स ये फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कि आप क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करो, साथ के साथ आप किस तरीके से आपका ना सिर्फ रिड्यूस वो डाउन टाइम आए बल्कि आप अपना प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव कर पाओ। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास में काफी बिग डेटा हो, आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज कर पा रहे हो कि क्या कंडीशन होने वाली, क्या फ्यूचर में पॉसिबल है, आप कैसे डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, क्या ऑपरेशन जो परफॉर्म होने वाला है उसमें कहाँ पे क्या लेगेसी आ सकती है, उन सब चीजों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वेदर स्टेशन का, कि वेदर स्टेशन कैसे वर्क करता है, और फिर इस वेदर स्टेशन का हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके कुछ पोर्शन हम लोग इसी जो आईओटी प्लेटफॉर्म अपना थिंगवर्क्स इसके साथ में हम लोग चेक करके देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो कल मैं आप लोग ये जो कंट्रोल एडवाइजर एक ऑपरेशन मैनेजर कैसे काम करता है
तो ये किस तरीके से ये डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, तो हम लोग इस पोर्शन के ऊपर वर्क करेंगे। सो एटलीस्ट यू कैन गेट द आइडिया कि हम कैसे अपने स्टूडेंट को इंडस्ट्री ओरिएंटेड रेडी कर सकते हैं, क्या मार्केट में चल रहा है, जस्ट उसके बारे में आइडिया। तो अगर मैं समराइज करूं तो आज का मेरा टॉपिक में डेमोस्ट्रेशन या आपको एक्सप्लेन करने का सिर्फ इतना सा पर्पस था कि एक इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, एक इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, और कैसे हम लोग डाउन टाइम न आने दे, एक इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे। कल का जो अपना सेशन होगा वो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो IoT प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कैसे करें, और जो कुछ भी आप लोग वीडियो में देख पा रहे थे उस वीडियो में से जो टास्क है, जो डैशबोर्ड है अपना, उस डैशबोर्ड को हम लोग डिजाइन कैसे करें। तो कल हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you so much for such a nice presentation of an industry. And final vote of thanks, I will tell you on the after the tomorrow's session. But thank you so much that you have accepted our request for this preponed schedule. And I want to thank all the team members, all the committee members of this FDP. Special thanks goes to DST members, Dr. Naveen Vashist. He has helped us a lot regarding the funding for this FDP. And I want to thank to our management of Tirthankar Mahavir University. Special thanks goes to our Vice Chancellor, Professor Raghuveer Singh sir, whose motivation always inspires us to do something new, right? And I want to thank to our Honorable Director sir, Professor Rakesh Dwivedi sir, who always motivate us to do about the new activities apart from the academics, right? I want to thanks to all the committee members, to co-conveners, Dr. Pankaj Goswami, Dr. Gulista Khan. I want to thank to today's coordinator, Dr. Rajiv. And thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you, participants, for your patience listening and for your attending the session. And thank you, Dilip sir. Thank you so much. So now we will meet tomorrow at 10 o'clock with the same session that will be continued. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.